Welcome back to the 364th episode of Thought Behind Things. Today is the 13th of September, which coincidentally is also my birthday. तो अगर आप ये देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करें. इसी के साथ साथ हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर नासिर एहसन, who is the founder and CEO of Abyss Solution. जब वो आए थे, I'll be very honest, I did not expect the conversation to turn the way that it did. What he's doing, जो ये कंपनी उन्होंने बनाई है, it's in Australia, but also they have offices in South America, they have offices in America, Middle East, Pakistan, all over the world. They're doing some really cutting edge work in artificial intelligence and machine learning. ये machine learning के ऊपर काम कर रहे थे as far away as 2004, जब दुनिया को इसके बारे में by and large पता भी नहीं था. And he really focuses on AI and ML pertaining to robotics and mining and autonomous vehicles and stuff like that. Some really cutting edge work. He's been to, दुनिया में ऐसे oceans की जगहों पर जहाँ पर आज तक कोई और इंसान नहीं गया. I'll be very honest, this is one Pakistani जो कि I was surprised that not a lot of us know about him. And जब आप इनकी स्टोरी भी सुनेंगे और ख़ासकर इनके आइडियाज़ सुनेंगे तो you would be pleasantly surprised as well. We obviously spoke about his early life, how he evolved into what he ended up becoming. But also उसी के साथ साथ we also try to understand कि जो आजकल दुनिया के अंदर AI और ML और ये हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं, बहुत सारी एवोल्यूशन हो रही है, न्यूरालिंक के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी और चीज़ों क्या हो रहा है, state of research इन सारे एरियाज़ में वो किस जगह पर है. We had a very detailed discussion about that. इसी की चैप्टर्स भी नीचे अवेलेबल है if you wanna check out any specific topic. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, because that really helps the algorithm and supports the podcast. अगर आपके कोई ख्यालात हैं तो let us know in the comment section below. I read all the comments and it really helps me improve the quality of the podcast. But anyways, this is Dr. Nasir Ahsan on TBT Go, Dubai Studio. जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया. मुझे ये बताएं, आर यू बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा या डू यू फ्लक्चुएट बिटवीन? आई यूज्ड टू बी बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट आई एम करंटली बेस्ड आउट ऑफ ह्यूस्टन, टेक्सास. अच्छा, इंटरेस्टिंग. व्हाई डिड यू मेक दैट मूव? द रीज़न व्हाई आई मूव्ड ओवर देयर इज़ क्योंकि हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुई थी, बट द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ और अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी, तो वो risk taking appetite or नई technologies का appetite, America is the land for it. Interesting. And one would assume side से बैठ के कि if you are going to America, San Francisco would be the most ideal place. But then recently हम ये भी सुन रहे हैं कि San Francisco के tax laws and वो सारा कुछ ऐसा है कि a lot of companies are moving to Texas, and then with Tesla moving there, a bunch of other companies moving there. How did that sort of इस पूरी इक्वेशन में वो was that a part? कैसे जी मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ तो maybe I need to optimize the way that I set up my company. That's a good question. हम लोगों का जो pull था वो oil and gas sector से आया था, predominantly. So our technology was being applied in the oil and gas sector, तो वो ह्यूस्टन से pull आया था. It was purely commercial. Attention, revenue सारा उधर से आना शुरू हुआ था. So 2018 तक हम लोग, I think 2018 was the first time I went regarding the business to the US. 2018 में तकरीबन एक हफ़्ता अप्रैल में मैंने गुजारा था ह्यूस्टन में. 2 weeks with my co-founder in June, and we already had Chevron, Exxon and Anadarko BPS clients. वो जो traction थी वो देख के I mean you can't say no. कर क्या रहे थे? I mean for an average user, बिल्कुल non-tech guy, non-corporate guy, what really were you doing for these companies? दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं. ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सरमाया
.pk जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं. अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट सरमाया फाइनेंशियल्स प्लेटफॉर्म. इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है, और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं. सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स. नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. बेसिकली मुझे जब 2018 में अप्रैल में बुलाया था, it was an interesting start. हमें बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंट करने के लिए. अभी तक हमारी ऑयल एंड गैस में कोई एंट्री नहीं हुई थी. मेरे दिमाग में बहुत पहले से था एक I had a picture in my head. I have lots of pictures in my head that drive me in a direction. But 2018 I went to present at a conference. It was 7 a.m. in the morning. It was just a normal regular conference जिस पे Anadarko ने जिसको host किया था. I went in. I caught the conference organizer at 7 a.m. before everything started getting busy, and I went up to him and I said, well, you guys called me all the way from Australia and you hosted me to come here to speak at your conference. I would really love the opportunity to talk to people at Anadarko and show them what I'm doing. And that's all I just want to do. Don't want to go back just giving a presentation. Usne mujhe kaha, yeah, why don't you follow me? And he took me to the corner jahan ek banda tare sahi kar raha tha. And apparently he said, hey, meet Jim Rainey. He's the director of engineering and technology. And I said, okay, sir, I'm here all the way from Australia, and I just wanted to show you what I brought here. And 2 days later, he organized all his directors at Anadarko on the round table, and he said, get up and speak. हमने 2 घंटे कोई घंटा डेढ़ प्रेजेंटेशन दी, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बताई जो हम दूसरे सेक्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं. Because we're a novel technology, what we typically do is when we enter a new market, we typically show our capabilities, and we are very client oriented in the sense that what problems can we solve for you with these capabilities? I mean, this is new technology. तो वो करने के बाद ना तो कुछ applications वगैरह निकली, and then the room went silent, and that's when Jim Rainey kicked back and put his feet on the table, and he said, I don't know if he put his feet on the table, but he kind of looked like that. And he said, so when are we going to pay him up, boys? And I'm looking around, and everybody's quiet. And then Colin Pickle, who was the general manager offshore, he's scratching his head and, thinking and scratching his head, and then knocks on the table and he says, you know what, screw it, let's do it. और उधर से हमारा पहला पीओ निकला. And it was that, really risk appetite for risk that attracted me. It's a land of entrepreneurs. United States has had a long history of, मेरी कोई ज़ाती connection नहीं है, ना मेरी कोई family है, ना मुझे कोई personal interest है in the US. लेकिन वो जब एक entrepreneur एक इस तरह का culture देखता है ना, it's very very appealing, क्योंकि you can deploy ideas and transform ideas into products and commercialize them very quickly. So for an entrepreneur, that's the dream, right? So that's it. I moved there for, मैंने रातों रात अपने बैग पैक किया, बेगम को बताया, और we got our daughter, and we had one daughter at that time, and we packed our bags. In 2 weeks we were gone. अभी 2018 की बात है, और अभी तक मेरा सामान स्टोरेज में पड़ा हुआ है सिडनी में. Really? Yes, every year I go there, I'm like, यार मैंने स्टोरेज से निकाला है. And now it's so old that I think I'm just going to get rid of it. And I ended up paying 5 years of storage fees for nothing. And then we moved there, and we didn't know anything. We didn't know anybody. And it was all over from ground zero again, opening up a new market and being on the front lines. So if I let's sort of loop back a bit. हाँ जी. Where were you born? आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे? नहीं, मैं कराची में पैदा हुआ था. मेरे वालिद साहब कराची के हैं, और मेरी वालदा जो है वो northern areas की हैं. Right. But settled in Quetta. Our family was settled in Quetta. तो मैं पैदा कराची में हुआ था, because my father wanted me to be, next to his mother and my grandmother and all that. But मेरा ज़्यादातर वक्त has been spent between, we've been living in Islamabad for a very long time. तो इस्लामाबाद में हमारा घर है,
और अल्लाह के फजल करम से, और मेरे वालिद साहब उधर आए थे इस्लामाबाद in 1971 after finishing his PhD. अच्छा, interesting. And what was he doing? Was he working for the government at the time? नहीं, he was a university professor. I come from an academic background. हमारा academic background है. Interesting. उन्होंने किस चीज़ में PhD की थी? Mathematics, pure algebra. He was actually, I'm very proud of my father. He's one of the most renowned mathematicians in Pakistan. अच्छा. Yes. Wow. Yeah. And so education for most part was in Islamabad for you? मेरे father जो थे वो it's a funny story क्योंकि we used to move between Saudi Arabia and Pakistan. तो Saudi Arabia में मेरे वालिद साहब जो थे, he was working at King Fahad University of Petroleum and Minerals. I'm actually a graduate of Jama Malik Fahad. और हम लोग 3-4 साल सऊदीया में होते थे, 3-4 साल इस्लामाबाद में, because my father is a very patriotic person and he's always carried this very strong passion to help the youngsters and the people in the country. तो वो 3-4 साल बाहर रहते थे, तंग आके वापस चले जाते थे. फिर पाकिस्तान में limitations की वजह से he would feel that he needs to go back to Saudi Arabia, and then so he would go back to Saudi Arabia, and then so we just spent 4 years here, 4 years there, 4 years here. So we've been moving back and forth. So I've been in Islamabad, like I was born in Karachi, but then we moved to Saudi Arabia, came to Islamabad around 85, 86, stayed there till 92, moved to Saudi Arabia, came back in 97, stayed in Islamabad till 99, moved back for my undergrad in 99, and then I left Saudi Arabia in 2004 for good. Right. और सऊदी में आपने undergrad किस चीज़ में किया? Computer science. अच्छा. This is 99 when you started, yes, right? Sir. What was the thought process there? Because आज कोई कंप्यूटर साइंस करता है बड़े डिफरेंट थॉट प्रोसेस से करता है. उस टाइम पे कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा था तो अगर कोई बैक होम किसी खाला चचा को बताएं तो वो कहेंगे यार आर यू श्योर व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट, राइट? Well, if you want to hear the real story, it's actually quite superficial. उसमें कोई depth नहीं है. I was sitting with my friend. मैंने कहा तूने कौन सा major choose किया है? वो कहता मैंने ये किया है. मैं कहा चल मैं भी यही कर रहा हूँ. And then we got in. And I hated computer science for the first couple of years. I hated it. Why? Because I would have assumed your father was a mathematician, math being the heart and core of computer science. Yes, it is. It is actually computer science and applied is a branch of applied mathematics. Right. तो क्या कहते हैं? Even though my father was a professor, I was never a good student. Right. Even though और मेरे father की और मेरी personality भी बहुत मुख्तलिफ है. मेरे father बहुत calm, collected, cool, composed, very methodical, very timely. I'm more what should I say, ambitious in the sense ke risk taking, loud. Are you the youngest sibling? No, I'm the oldest. You're the oldest? Yes. Achha, interesting. Yes. I would never have assumed someone with the opposite personality of the father is the oldest. Generally, eldest jo hain wo follow karte hain. I'm the oldest, and I wasn't a very satisfying child for my father either. I was a troublemaker. I was a rebel from the get-go. Hamesha se always liked to do things differently, and my father was very respectful of that. I mean, he always tried to guide me. Gave you your gave me space direction, gave me my space. That's very important. Gave me my space. Always, also, jab zurat padti thi, he would use the heavy method. Lekin he gave me my space and let me explore. But kya kehte hain? I was different to my father. Interesting. Yeah, very different. 2004, you graduated, right? Yes, sir. And you said you left Saudi. Where did you go? Pakistan? Pakistan आया था. क्योंकि I left home, by the way, in 97. So when I was at the age of 16. So that has had a big influence in my life. तो मेरी family split हो गई थी in the age of 16. Basically मेरे वालिद साहब ने मुझे और मेरी बहन को पाकिस्तान भेज दिया to study and do high school. क्योंकि मेरे वालिद साहब हमेशा चाहते थे पाकिस्तानियत इनग्रेन हो हमारे अंदर. Right. He always had that thing कि उर्दू अच्छी आए. I'm not very good at it though. लेकिन उर्दू भी अच्छी आनी चाहिए, अपनी ज़बान भी अच्छी आनी चाहिए, अपना कल्चर पता होना चाहिए और अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए. ये मेरे वालिद साहब का शुरू से वो था. So he sent us back. उन्होंने कोशिश भी की थी सऊदी अरब में मुझे पाकिस्तानी स्कूल में डालने की, and then I just couldn't settle जब मैं उधर था. But
that was also one of the reasons why we kept moving back. Right. So he sent me to do my high school in Pakistan. तो उस वक्त से मैं फैमिली हमारी स्प्लिट हो गई थी. मैं और मेरी बहन इस्लामाबाद में होते थे एंड आई वाज लाइक 16 एंड शी वाज लाइक 14 और समथिंग. और फिर उसके बाद व्हेन आई फिनिश्ड हाई स्कूल मेरे वालिद साहब के साथ मैं सऊदी अरब चला गया. मेरी वालदा मेरी बहन के साथ आ गई इस्लामाबाद. एंड 2004 I came back. I spent about 6 months and then I went to Australia to do my master's. Acha, which was in what? Which was in, again, computer science, but I did my master's by research in applying machine learning into molecular biology. So I worked in molecular biology for a while, trying to come up with techniques on how to model the causes of cancer. Acha, interesting. Yeah. So a couple of questions. First, machine learning in 2004. हम जैसों ने, मैं भी कंप्यूटर साइंस मेजर हूँ, बड़ा लेट. हाँ जी. हम जैसों ने तो मशीन लर्निंग के बारे में सुनना शुरू किया 2008, 2009, 2010. What was happening in the machine learning world back in that day? पहला सवाल. And then इसी के साथ follow up के ऊपर, why did you choose to focus yourself in the molecular biology space, considering you didn't have a background of biology before that? I have answers for that. Like I said, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बस हो गया. And I don't know how it happened, and I'll tell you why. Basically, why I started liking computer science. So I told you initially I hated it. मैंने 2002 में या कुछ इस तरह करके internship की थी कॉमसैट्स के सॉफ्टवेयर हाउस में, and I literally realized कि यार अगर मैंने यही करना है ना ज़िंदगी भर, then I'm out. I don't like this area. I am more of a out guy, make it happen guy, execution guy. एक्शन मुझे ज़्यादा पसंद है. और मैं हमेशा अपने आप से यही कहता हूँ कि अगर मेरी एकेडमिक फैमिली ना होती तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं फ़ौज में चला जाता. I would have definitely gone into the army and done something there, and I always wanted to do that. लेकिन क्या कहते हैं 2002 में I was very fortunate to get a very 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 my first mentor after my father, proper mentor, Dr. Krishna Rao. He actually was traveling around the world. He was a renowned computer scientist who decided to stop by the Middle East and see what life is like over there. बहुत ही interesting personality. They used to, while everybody had cars in Saudi Arabia, आपको तो पता है इधर Middle East में क्या culture होता है. The guy would have a Sorab cycle. In that heat? Yes. In this heat? Yes, he would have a Sorab cycle. He would come up. बहुत ही देसी आदमी थे, इंतहाई देसी. Like self actualization के एक अलग ही level पे थे कि कुछ और ही चीज़ थे. And that he just inspired me so much क्योंकि he was so different, and I was always attracted to different. Different in terms of opportunity, different in terms of people, because I could just never be content with what is the norm. ठीक है, तो I started approaching him. And पहले 2 साल तो मेरा कोई पर्पस भी नहीं था. पहले 1.5 साल 2 साल I wasn't doing very well. I didn't do very well in my high school, and I actually studied very hard for A levels. उस वक्त मेरे वालिद साहब का काफ़ी कंट्रोल भी था, ये करना है वो करना है, अच्छा पढ़ना है. And then I didn't get good results. Right. And so basically I lost it. I said, why do I need to study? So, and I'm just taking a step back just to kind of give some context here why I got so close to that teacher. So when I got into university, I just literally went berserk. पढ़ना नहीं, ठीक है. A levels की वो knowledge थी, तो I had a bit of a step ahead from Saudis. So I had about a year or a little less than a year where I could recycle my knowledge and enjoy without studying and get away. And I got into वो जो जवान लड़कों के वो होते हैं, फड्डे करना, ये करना, वो करना. I don't know if I'm allowed to say any of that. लेकिन वो सारी उस तरह की ना वो चीज़ों में, अल्लाह का शुक्र है गुनाह कोई नहीं किया उस तरह के, लेकिन वो वो testosterone निकालना, aggression निकालना, and I basically broke out of the shell. Right. Because I reached an age where I was like, screw it, I'm not going to listen to anyone. Everybody has always told me how to do things. बचपन से मुझे बताया गया था कि तुम जज्बाती हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह रहो, इनके साथ रहो, इस तरह करो, ये करो, वो करो. और वो चीज़ें जो है ना वो culminated into something that just wasn't fitting in myself. And then when I got to an age where I could break out of that, I broke out of it, and I broke out of it real hard. I got into lots of trouble. I mean,
I don't know कितना मुझे कहना चाहिए, लेकिन I mean everything you can imagine that is not to the point of के इज्जत हमारी खराब हो गई है, फटे करना, लॉकअप में फंस जाना, ये चीजें करना. In Saudi? Yes sir, in Saudi. Scary. I've been locked up in Saudi as well, and though the reason for that was extremely hilarious. I actually bought new glasses and I didn't have insurance, and I went and I couldn't see properly and I hit a car, and मुझे नहीं पता था कि पहले से ही एक्सीडेंट हुआ हुआ है, and then they just put me in the lockup. उन्होंने कहा 2 सऊदियाँ आ गए, इसी के ऊपर इल्ज़ाम डाल दो, इसको उठा के बंद कर दो. But anyhow, I got into a lot of trouble, and the epitome of it was and this is where like really my mind reached a point where it was going to extremes very quickly. So, and I got to a point where I literally got beaten up by 100 people. 100 लोगों ने से मार खाई है. और वो वक्त था जब मुझे एहसास हुआ कि अनसस्टेनेबल होता जा रहा है थोड़ा सा. ये मैं कोई खुदा नहीं हूँ ना, मैं कोई बादशाह हूँ. I might be able to exert my influence or my aggression, but at the end of the day मैं कुछ भी नहीं हूँ. और मैंने उस दिन से अहद कर ली कि ना मैं किसी से लड़ूंगा, ना मैं किसी से कुछ करूंगा. और उसी वक्त मैं पाकिस्तान आया था with my renewed self, and I ऊपर जा रहा था. I shouldn't say this either, लेकिन वो कुछ मुंह में आया, थूका मैंने, वो बेचारे किसी पठान के मुंह पे जाके लगा. मुझे मैंने उसको कहा I am over it, please, माफ़ी मांग लूँगा, पैर पकड़ लूँगा, जो करना कर लो, लेकिन लड़ो नहीं मुझसे. So that was something. लेकिन I lacked purpose. If I were to ask you, you mentioned a lot about sort of anger management issues and rebellion issues. Yes. Were you ever able to sort of pinpoint as to where that was coming from? I feel like that's a lot of Pakistani young boys. You have, I'll tell you, it's lack of purpose. Achha. It's lack of purpose. You see, channeling your energy is not a bad thing. हमें हमेशा कहा जाता है कि ये पागल है, जज्बाती है. नहीं, it's an energy. Energy is a blessing. It's a double-edged sword. अल्लाह ने आपको जो भी basic gifts दिए हैं, you need to be able to first recognize them. Then you need to be able to manage them, control them and channel them. हमारे तरबियत में, unfortunately मुल्क में, उसको बहुत क्रूड तरीके से लिया जाता है. उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि जिससे वो निकले ही ना, कोई बजाय इसके पॉजिटिव आउटलेट मिले, वो बस दब जाए. Exactly. अब हम लोगों की एनर्जी को चैनल किया जा सकता था into many things, right? Positive. But it doesn't happen that way in our countries. So it results in it coming out in the wrong way. But it was me who realized at some point, I don't know when it was, that I need to use it for my own benefit. And there was a point in those first 2 years of my undergrad when I realized that my emotions, my passion, mera jazba, meri aggression, if I can use them and channel them, then I can do unthinkable things. And that's when my journey started to, or that's really when my self-development journey started. मुझे मेरे वालिद साहब की guidance होती थी, but then this is what drew me to the love of having teachers. And till today, I worship my teachers. मेरे जो teachers हैं उनको मैं literally मुरीद मुर्शद वाली जो relationship है उसमें रखता हूँ. चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे जो भी हो, चाहे पाकिस्तानी हो. I worship them, I adore them, and I live to service or please them. So for me, learning became extremely critical because I realized I had a lot of deficiencies. So ये डॉक्टर साहब आए थे in my second year or third year, and I also lacked purpose. Purpose is also something that drives energy in the wrong direction. I don't know what happened. कुछ personal वो थे, realizations थी, कुछ experiences थे, कुछ दोस्त थे. When I realized that I need to move, when I need that मुझे बस पता था कि कुछ करना है. अच्छा, और ये purpose is funny. It doesn't come by birth or something. I mean, you could follow the Humean school of thought and you can say, no, everything is by experience, or you could say it's natural. Well, I'm not a philosopher, so I'm not going to get into that. लेकिन मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत हाथ था. I don't know what it was, लेकिन एक वाक़या था which has defined a lot in my life. मैं छोटा सा था, इस्लामाबाद में थे. उस वक्त इस्लामाबाद में जंगल होता था back in the late 80s. और मेरे वालिद साहब घर आए रात को. My father used to walk a lot. 6 घंटे. He would walk all the way to Sadr sometimes from F10. अच्छा. He would walk to Qaid-e-Azam University and walk back. And he would do most of his research while walking.
ठीक है, in his head and think about problems. तो मेरे वाले साहब रात के 10-11 बजे एक दिन आए और पसीने से भरे हुए थे, एंड ही वॉज, बहुत सांस उनकी फूली हुई थी और बहुत परेशान थे. तो अम्मी बहुत परेशान हो गई. हम छोटे से बच्चे थे, मैं और मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, और हम उनको देख रहे हैं, एंड हिज होल शर्ट वाज वेट पसीने से, एंड ही सैट डाउन, और अम्मी ने उनको पानी ला के दिया, और एंड ही गॉट द होल फैमिली टुगेदर, और उन्होंने कहा कि बैठो, और फिर उन्होंने वाक़या बताया. उन्होंने कहा मैं गोल्डरा शरीफ की तरफ से जा रहा था, which was basically जंगल at that time, और जंगल से, now whether these stories are true or not वो एक अलग चीज़ है, but it has an impact. तो है, हाँ. तो वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग निकले जंगल से, completely white, he was gleaming white, and he just came out of the jungle, और झाड़ियों से निकले, और मुझे कहते हैं तुम जावेद हो? हाँ जी. तुम्हारे बेटे का नाम नासिर है? हाँ. वो एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा. And then he went back into it. And then he never saw him again. कभी भी ना तो उस रास्ते पे मिले ना कभी. अब जब आप एक बच्चे हों and you know you hear something like this, you don't know what it means, but things like this stick with you. और मेरे वालिद साहब ने मुझे इसी तरह हमेशा ट्रेन की. He never used to talk too much to me, but he would feed and inculcate this into me, and that you're born for a reason. And so what I needed to do was I needed to identify what that reason is. तो अंडरग्रेड में वो कुछ प्रोसेस शुरू हुई थी. तो जब मुझे मेरे टीचर मिले in undergrad, he kind of gave me some sense of purpose कि यार I got a direction I can go. He introduced me to AI. Right. He was an AI guy. उस वक्त AI classical थी, we were more into logic programming, and he was a theoretician and so on and so forth. And I just absolutely adored everything he did. I loved the way he ate, he taught, he sat. मैं उनके घर जाता था. He would make me write proofs for 7 hours while he would be doing something else. मैं basically fully उनकी tutelage में रहता था. And he trained me very well. And it's through him that I got into the field of AI. तो जब I'm skipping the long training process and getting to the point कि आपने पूछा AI में क्यों आए हो, I wanted to do masters. Ambition बहुत था, और मैंने उनसे कहा कि सर मैं जाना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, I don't want to go to the US and I don't want to go to Canada because I don't want to do SATs or GMAT or whatever जो भी उनका GRE होता है मुझे. I just want to go straight and I want to get into research. तो उन्होंने कहा okay. And I was looking to write a research proposal to attract a supervisor in Australia. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ आइडिया दें. So he said machine learning and AI is a growing hot area. So that's kind of where it started from. मैंने literally जाके AI type किया Google में, ठीक है, and that's how it all starts. ठीक है, that's how it all starts, from baby steps. Like completely, these are such funny ways to do things, but that's how it all starts. मैं Google में type किया AI, machine learning, और मुझे 2-3 पेपर्स मिले. वो मैंने रिसर्च पेपर्स निकाले, और रिसर्च पेपर्स में से मैंने फ्यूचर वर्क का सेक्शन निकाला, वो प्रॉब्लम कॉपी की, उसको प्रपोजल में कन्वर्ट किया, और मैंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में भेजना शुरू कर दिया. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मोलेक्युलर बायोलॉजी. So there was कोई बड़ी सोच नहीं थी कि यार उस टाइम के ऊपर फोरसाइट. कोई फोरसाइट नहीं सर, कुछ भी नहीं. But I mean it was very logical. आपने से कंप्यूटर साइंटिस्ट से ना काम किया, कहाँ तक काम हो चुका है, क्या काम आगे प्रपोज हो रहा है, उस काम का मैं कहता हूँ मैं कर लेता हूँ, and you were able to break that down. So Australia में which university did you go to? I was fortunate enough to go to under the supervision of Dr. Mike Bain, University of New South Wales. Right. मुझे अगर पहले तो ये बताएं, because इस यूनिवर्सिटी को तो मैं पूछूंगा ही, King Fahad University? हाँ जी. Right? How was that? Because Saudi was not necessarily very renowned for its academic sort of legacy, right? And so you've now done your PhD, you've been around the world. How do you compare that? Sir, I'll tell you this. So King Fahad University was a little Alice in Wonderland place in the Middle East. It was set up by the Americans. It was set up for Aramco, which is, as you know, the flagship of the Saudi economy and the flagship of the Saudi. Well, everything that they've done is through Saudi Aramco. Saudi Aramco now, after spending so much time in oil and gas, traveling the whole world, meeting all the operators, Saudi Aramco is truly an impressive beast. They are technologically extremely savvy. I mean, I am telling you, their appetite for solving problems, their ability to solve problems, and the challenges they face at the scale at which they have is unparalleled.
ठीक है. I mean, Really? I would classify them next to. I mean, आपको मैं बता रहा हूँ. I'm sitting in a room filled with Saudis from Saudi Aramco. It's a world in of itself. It doesn't exist outside Saudi Aramco like that. So they talk to me at the same way as I would talk to those guys at Anadarko. Risk taking, Right. appetite for innovation. ठीक है, it's a state-owned enterprise. It's a bit slower than Anadarko. That's an understatement. But they are extremely well aware of the science, the fundamentals, the vision, the frameworks to innovate, the framework to solve problems. They have it. So King Fahad University was a byproduct of that. It was actually a college designed for Aramco. So the Americans, as long as they stayed in Texaco, which then became Aramco, also managed to continue that legacy into KFUPM. So KFUPM, जब मैं बड़ा हो रहा था, was filled with foreigners. Right. I knew all different kinds of people, Greeks, Americans, British, blah, blah, blah. So it was a very multicultural area. और उधर जो research का atmosphere था, under the excellent leadership of Bakr bin Bakr, it was phenomenal. They were one of the top 100 universities in the world. They had amazing research coming out of there. They had amazing collaboration. And I'll tell you this, मेरे वालिद साहब UPM आए कैसे थे? My father worked very closely with Professor Abdul Salam. And they used to spend time together in Trieste, Italy. This was in the early 70s. और Professor Abdul Salam के पास एक professor आए थे who used to watch my father in Trieste in his institute. And he said to him, मुझे ये बंदा चाहिए. I need to take him back to Saudi Arabia. So Professor Abdul Salam मेरे वालिद साहब के पास है, उन्होंने कहा Javed, and you know who Professor Abdul Salam is, right? Of course. For everybody else, our Nobel laureate. And I'm very honored that my father knew him and spent lots of time with him. He basically came to my father और उन्होंने एक बात की. उन्होंने कहा Javed, दीन और दुनिया अगर चाहिए, इधर जाओ. And so my father was like, ये कौन सी जगह है? मैं इधर क्यों जाऊँ? I mean, मैं तो अभी डंडी से आया हूँ. I did my PhD. I can go to Caltech. I've been to Cambridge. I've been to all these other places. Why should I go there? And then my father decided to come there. And he absolutely loved it. Because my father is an introverted solo worker, and Saudis just, unko sirf, they give you that space. Right. So KFUPM over the years has not been the same, ठीक है, but it was a very top class university. उसका standard थोड़ा सा गिरना शुरू हो गया था as we got into the 2000s. I think it's starting to pick up again, but उसकी जो 80s 90s में जो reputation थी was really top notch. So that's the story with KFUPM. And what about your experience in Australia? Because this was the first time now you were in Yes. Australia for your education. Yes. So I did have enough experience of living alone so far, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो मुझे UPM में छोड़ के 2001 में चले गए थे. So I was living alone in Saudi Arabia. The interesting thing was I had never been to the white man's land. I mean, बचपन में अब्बू के साथ थे, but that's a separate one, not as an independent older guy. तो वो मेरे लिए बड़ा interesting था coming from Saudi Arabia, which is very closed and very, this. और हमारे यहाँ मुल्क में बड़ा बताते थे, पे जैसे सोने की कानें हैं ऑस्ट्रेलिया में ये वो. And then when I went to Australia and I was like, what the hell is this place? छोटी छोटी गाड़ियाँ, पुराने bathroom. Excuse me, but I mean, I was actually surprised कि इधर कोई ये भी दुनिया के पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया जाके ये सोचते हैं. I mean, I was used to like big roads or GMCs and this. और उधर जाके छोटी छोटी गाड़ियाँ, छोटी छोटी सड़कें, तंग गलियाँ, and I didn't really. It took me a while to get used to Australia. And it was like the other end of the world, right? Like they needed to bring anything and everything from all the way across the ocean. Yeah. But in terms of infrastructure, you went into the early 2000s? So I went in 2004. 4. Yes. How was the infrastructure there? Was it comfortable? It was okay. I mean, they had old houses. Middle East by and large is luxurious. Middle East एक दुनिया का ऐसा आपको देता है ना. Sydney is not luxurious. And most of the world isn't. Yeah. So comfort is different. Luxury is. बट कंफर्ट ये कि यार मेरी बेसिक्स मेरी नहीं वो तो पूरी थी. सर्दियाँ गर्मियों में मुझे टेम्परेचर वो हो जाएगी, मेरे ग्रोसरी में मुझे हर किस्म की चीज़ अवेलेबल होगी, पंखे लगे हुए हैं, वो कोई टेंशन कंफर्ट. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं है, पंखे लगे हुए हैं. सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं थी उस टाइम पे. नहीं, आई मीन मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर ओल्ड, राइट.
200 years old. I mean, जिस या तो अगर आप फ्रेश कंस्ट्रक्शन बनाए तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं रहता था हॉस्टल्स में, they didn't really have central air conditioning. Most of the time I would rent my own apartment. I'd have to buy a fan, and then when I go to the market before summer, fans सारे sell out हो जाते थे, and then I would be sitting there. So I mean, that's the kind of stuff you would have there. But Australians are tough. अच्छा, how so? I mean, they're used to that. Like they हमारे यहाँ समझा जाता है जितनी luxury हो उतना आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, but actually you should be able to live more like tougher life. You don't need ACs, you don't need fans, you don't need super heaters. Just live with it. Yeah. And Australians are very good at that. Olympics के medals सारे वो लेकर जाते हैं ना, because they're just बहुत tough कौम है. बहुत tough कौम है. And you know what? Eventually you get used to it because it's a different mindset, it's a different lifestyle. You know, you don't. सऊदी अरब में तो हम बाथरूम भी गाड़ी में जाते थे. I was introduced to the art of walking in Australia and cycling. So I mean, you go through. अब मुझे तो कितना अर्सा लगा था बस में बैठने के लिए. अच्छा. I've never traveled in a bus. ट्रेन कैसे होती है, इतने complicated systems. तो वो जो पाकिस्तानी ऐसी जगहों पे जाते हैं उनको ये चीज़ें महसूस होती हैं. Right. In terms of the education and the research, now you've gotten yourself into a very complicated field and a complicated subject. How did you sort of go through that? Was it standard, ठीक है चल रहा है, हो रहा है, whatever? Yeah. How did I get into it? So when I got into molecular biology, so machine learning has been my thing. Right. I've been trying to run away from it all my life, लेकिन अल्लाह का पता नहीं करना इस तरह, keep coming back to it. Molecular biology में जो मैंने 2 साल गुजारे, I mean applying machine learning into molecular biology. So being in machine learning, the interesting thing is you get to work with all different sorts of fields. So when I was applying this into molecular biology, I kind of got sick of biologists because जो भी mathematical model मैं लेके आता था to pose a problem, like to model a problem, there would always be uncontrolled variables. And I didn't have control over the data I was collecting, and I just felt like I'm more and more becoming a tool maker for biologists. तो मैं एक दिन अपने supervisor के साथ बैठा, मैंने कहा that's how I feel. I don't want to be a tool maker for biologists. I want control over my data. I want control over my destiny. I want to control the research problem. I want to feel the research. I don't want to be driven by data collected by somebody else, assumptions by somebody else, and just kind of like mine something out of it. I want to understand science, and I want to be able to interact with the problem. And that's when I decided to get into robotics. But there was also another reason. And you're going to edit this, right? Eventually. And you can decide what to take out and keep in. Just for the flow of being organic and natural. मुझे एक दोस्त मिले थे, कमांडर साहब. वो ज़माना था जब पाकिस्तान में अताउर रहमान साहब ने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स वो की थी. HEC का बूम आया था. उस वक्त तो मैं नहीं गया था HEC पे, उस पर मैं सेल्फ फंडिंग पे गया था. वो मेरे अब्बू की वो थी मेरे ऊपर. I met a commander over there, and that was a turning point in my life. Commander Junaid Hussain. Very grateful to him for meeting me over there and giving me his company. वो नेवी से आए थे, and he was doing an exchange from Nust to University of New South Wales. उस वक्त फ़ौज के बड़े लोग आए थे, और फ़ौज मेरे लिए एक बहुत मुकद्दस किस्म का इदारा था. I mean, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, and सऊदी भी मुझे कहते थे when I was in Saudi Arabia कि you are the beacon of the Muslim world, Pakistanis. Because you have the brains to, I mean, आपकी army है, it's the 6th largest army in the world. You have nuclear weapons. You can bring back that, वो जो सब एक romanticization है हम लोगों की, bring back the old Muslim glory. Yeah, a lot of people around the world feel like that. Unfortunately, I don't think that perception exists anymore. Yeah. लेकिन it did exist back in the day. तो वो मुझे मिले, और मैं भी बड़ा वो था कि मैंने पाकिस्तान जाके अपने मुल्क की मदद करनी है और ये करना है. ये मेरे अबू ने मेरे अंदर inculcate किया हुआ था. So I met him, and he said to me कि he was telling me his story about जब 9/11 हुआ था. 9/11 हुआ था तो Pakistan under Musharraf was actually at war with America. Nobody actually knows this, but we were. और Musharraf ने internally alert कर दिया था हमारी forces को, और हमारी जो navy है went out onto the open ocean and was standing in front of the American aircraft carrier, which carried the entire army they were going to invade Afghanistan with.
तो बेसिकली रोज़ इनकी टिट फॉर टैट होती थी. वो अपनी एक मिसाइल फायर करते थे तो ये दूसरी तरफ से करते थे. Nobody knows about this, but this was actually happening. It's like an ant and an elephant, right? Yes. But we had to defend the country one way or the other. मरना तो है ही ना मुल्क के लिए. Right. So they had to do what they had to do as protocol. तो वो when that happened, तो ये he was a commander of the weapons. तो I was just उस वक्त अफगानिस्तान की जंग भी हुई थी, खून भी बहुत गर्म था. मैं कहा यार इनको उड़ा क्यों नहीं दिया. कहते हैं यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है तो कैसे उड़ाऊँ इनको. मैं कहा यार एक मारते मिसाइल उनको, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर गिरा देते, ये हो जाता वो हो जाता. तो मुझे कहते हैं कि एंड अपार्ट फ्रॉम आई मीन द पोलिटिकल साइड ऑफ इट विच इज़ नॉट व्हाट आई एम into on the technological side of it was what I was really interested in, right? तो मैंने उनसे पूछा कि what was stopping you from firing on them? तो he said कि if we fire a missile it will be intercepted. ठीक है. And even if we do manage to hit them, it will be मतलब it's an aircraft carrier, it has internal compartments. जो बाहर डैमेज हुआ होगा हिस्सा वो एक्सटर्नलाइज हो जाएगा और इंटरनली नई उसका हल जो है रीशेप होके ना इंटरनली वो हो जाएगा. सो देयर इज़ नो वे वी कैन डू इट. मैंने कहा न्यूक्लियर टिप क्रूज मिसाइल लगा दो उसके ऊपर. उन्होंने कहा उधर तक पहुँचाएगा कौन. एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट हैड द आइडिया कि हम लोगों को डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के ऊपर टेक्नोलॉजिकली काम करने की ज़रूरत है. And this is what drove me towards robotics. What I said, what if you had an autonomous torpedo or something, right, that could dodge things and get it over there? So that's when I started developing a bit of an interest in the robotics side of it. Not that I pursued it after that, but I developed an interest. और मैं फिर आया पाकिस्तान, right, to pursue this further. मुझे बड़े लोगों ने गालियाँ दी क्योंकि मेरे सारे दोस्त उधर गए थे and everybody loved to पता नहीं पाकिस्तानियों में क्या मसला है. आई डोंट नो, मे बी आई एम एबनॉर्मल, आई एम नॉट नॉर्मल. नॉर्मल पाकिस्तानी नहीं हूँ या तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ और चीज़ें सिखाई थी. मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि तुम उधर जा रहे हो, इन्वेस्ट इन योर स्टडीज़, साइड के कामों में नहीं पढ़ना. डोंट डू पार्ट टाइम वर्क, डोंट वरी अबाउट मनी. अभी मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट कर दूंगा, तुम इसके ऊपर फोकस करो. वी आर इन्वेस्टिंग इन योर स्टडीज़, मेक श्योर यू अचीव अ गुड क्वालिटी एजुकेशन. और उन्होंने मुझे ये शुरू से बात की थी. उन्होंने कहा आदमी की जो काबिलियत होती है उसकी बुनियाद पे जो खड़ा होता है वो वाकई में उसकी सॉलिड फाउंडेशन होती है, एज अपोज टू अ पर्सन हु स्टैंड्स ऑन पेपर्स, जैसे पासपोर्ट और ये और PR और वो सारी बकवास जो होती है. सो उन्होंने मुझे कहा पेपरों के पीछे और इस तरह की फजूल चीज़ों के पीछे नहीं भागना. इट डजंट मैटर कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है या ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, तुम्हारी अगर क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं एंड यू आर अ केपेबल गाय, तुम्हें पूरी दुनिया में हमेशा रिकग्नाइज़ किया जाएगा. तुम्हारे पासपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड आई एम एन एग्जाम्पल. हालांकि उनके दिन में मुश्किल था, आसान था, मेरे ज़माने में ज़्यादा मुश्किल हो गया था. बट हिज मैसेज वाज वेरी क्लियर. तो मैं फोकस करता था उधर अपनी स्टडीज़ पे. एवरीबडी एल्स वाज टू बिजी डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स क्योंकि उनको गिल्टी फीलिंग होती थी कि हम अपने पैसे इधर लगा रहे हैं. एंड पेनी वाइज अ पाउंड फूलिश. और एक वो मॉब मेंटालिटी है. एक ने 7-Eleven में काम किया तो 100 उधर, सारे के सारे उधर ही लग गए. एक सिक्योरिटी गार्ड गया तो आपको वो ये टैक्सी ड्राइवर मिलेंगे या तो पाकिस्तानी, या तो सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे या तो वो. एंड अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू कमिंग देयर एंड यू गोना स्पेंड सो मच मनी, यू वांट इट टू बी यूज्ड इन द राइट वे. तो मैं मुझसे जब उधर आके लोग पूछते थे कि यार हमने डिग्री लेनी है, तो मैं उनसे पूछता था क्यों कर रहे हो. यार PR चाहिए. नहीं यार, वाई यू स्टडीइंग, PR चाहिए तो और 1000 तरीके हैं. एंड दैट्स व्हाट मैनी वुड डू देन. कोई बार्बर बन गया, कोई अकाउंटिंग की डिग्री करने आए साइंस की और बस PR लेने के लिए. तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया छोड़ के गया हूँ इन दैट एनवायरनमेंट, मैं छोड़ के इसलिए गया क्योंकि पहले तो सब मैं पाकिस्तान इस तरह कर लेंगे, इस तरह करना है, सब मुझे कहते थे तुझे क्या तजुर्बा है पाकिस्तान का, तुझे क्या पता है, तूने कभी काम नहीं किया है, तूने ये नहीं किया. तो आई डेवलप दिस पैशन टू गो बैक टू पाकिस्तान एंड लर्न. राइट. So when I came back, मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी थी, बहुत गालियाँ पड़ी थी. And you're young, you're 21, 22. At some point, you start to think, you know, why am I doing this? सारे मेरे दोस्त, यार तूने बहुत गलती की, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया, you know, जन्नत छोड़ के इधर आ गया, उधर आ गया. हालांकि उधर कोई जन्नत नहीं है, उधर 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सबको. पाकिस्तान में बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलती हैं. सो why do I need to
I mean not that we're rich or anything, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है और respect है और first मतलब we're Pakistanis, we're not second or migrants or this or that. तो when I came back तो there was a point where I got into depression कि ये मैंने क्या कर दिया. आके नस्ट में मैं काम कर रहा था, which is another funny story. पर मैं नस्ट में काम कर रहा था and people would keep telling me कि क्या पागल है ये कर दिया. तो one point I just flipped. And I realized, and I said this to one of my friends, I said, you are, for the goals that you have set in your own life, you are very successful, and I am very unsuccessful. But for the goals that I have set in my life, I am very successful, or I'm on the way to success, and you are far from it. So stop telling me what मेरा और आपकी ज़िंदगी का नज़रिया मुख्तलिफ है. Stop telling me what I need to do in life. और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिजीज़ है ये. एक बंदे ने किया, सब ने यही करना है. We don't think for ourselves कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. सो when I came back to Pakistan, मेरे वालिद, and that was another turning point in my life. I left Australia, PR नहीं ली. मैं कहा मैंने नहीं लेनी, मैंने आना ही नहीं है वापस, मुझे क्या करना है. मेरे ज़िंदगी का मकसद और. So I want to go back and I want to work with the Pakistan Army. I want to help them. I want to you know, मेरा ये था कि I wanted to start development in defensive technologies, क्योंकि हम कोई conquering nation तो है नहीं. We need to be able to protect ourselves, to develop leverage. अफगानिस्तान की war ने बड़ा traumatic impact भी किया था, because you would see all those kids suffering and dying and killing, and और फिर हमारी agencies में हो रही थी चीज़ें. It has an effect, right? Of course. I'm not talking politically here. I'm just talking purely from a humanitarian perspective. Late 2000s were horrible, right? Like war on terror चल रही थी. Exactly. Schools में bomb blasts हो रहे थे. Exactly. It was horrible. I mean, मैं जब काम पे जा रहा होता था, 10 minutes before there would be a bomb blast on my way, or 10 minutes after I've crossed that point, एक बम फटता था. And getting away from what is this और कौन क्या था, I mean, no need to get into all of that. वो मेरा काम नहीं है. मैं मतलब it would affect every young guy. तो I wanted to come back. तो मैं आया वापस. तो funny thing is, मेरे वालिद साहब 3-4 दिन में 2.5 साल बाद आया वापस. I saw my parents जब उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे. So I saw them after. ये सबसे लंबा पीरियड था that I was away from home, because I didn't have money to come back. पैसे नहीं थे. तो मैं जब वापस आया तो मैंने कहा यार अब 6 महीने टांगे चौड़ी करके ना मज़े करने. मैंने फिल्में देखेंगे, रात भर ये करेंगे. वो I was still 23 था. 23 and done with your masters already. 23, yeah, 23 and a half or 24, I can't remember, something like that. तो मैं वापस आया, yes, and done with my masters. So when I came back, मेरे अब्बू ने तीसरे दिन मुझसे पूछा क्या कर रहे हो. मैंने कहा कुछ भी नहीं, बैठा हूँ. मैं इतने 2.5 साल बाद आया हूँ, 6 महीने मैंने रिलैक्स करना है, आप लोगों के साथ टाइम गुजारना है. देखें 97 से मैं आप लोगों से लेता हूँ. So I want to spend some time with you guys, और आप लोगों का ख्याल है. मेरे अब्बू कहते हैं ये हफ्ते का आखिरी दिन जुम्मे तक है तुम्हारे पास, नौकरी ढूंढो वरना लात मार के सड़क पे निकाल दूंगा. इतनी दिल पे लगी है ये बात. लेकिन वो दिन था और आज का दिन था. I never asked money from my father again. Everything else was done on my own. वो मेरे अब्बू ने मुझे अपनी टांगों पे खड़ा कर दिया. And so that the Nust gig was essentially from after that? हाँ, Nust was after that. तो मैंने basically अपने एक वो जो Nust के प्रोफेसर आए हुए थे UNSW को फ़ोन किया. मैं कहा सर मेरे अबू मुझे घर से निकाल देंगे, कोई नौकरी चाहिए. ओह हाँ आ जाओ you're qualified, मतलब आओ इंटरव्यू दो. Which was a really funny interview, क्योंकि मैं अभी गया इंटरव्यू देने Nust में, फुल फौजी माहौल, खेड़ियाँ और चादर और चित्राली टोपी पहन के. और मुझे नहीं पता था कि यार इधर ये प्रोटोकॉल होता है. पाकिस्तान में मैंने स्कूल में ही कुछ अरसा गुजारा था, कभी मैंने वर्क एनवायरनमेंट नहीं देखा एंड ऑल दैट अदर नॉनसेंसिकल स्टफ दैट हैपेंस इन आवर कंट्रीज़. तो मैं तो देसी माहौल में गया. मैंने वो अच्छा जी ऊपर जा रहा था तो बहुत, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ब्रिगेडियर अख्तर नवाज़ मलिक वो मेरे साथ थे. तो कर्नल जावेद उस वक्त थे, अब तो ब्रिगेडियर जावेद हैं इकबाल. ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ रोबोटिक्स. Huge amount of respect to him. A man who gets things done. He was the reason why I went there, क्योंकि he was a guy who does work. ठीक है. And a man behind most of the things in Pakistan when it comes to robotics. तो वो मुझे ना, अब मैंने कंप्यूटर साइंस से मैकेट्रॉनिक्स की तरफ छलांग मार दी. This was my first step in that.
और मैं ऑलरेडी PhD का प्रपोजल अप्लाई करके आ चुका था एट ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर फील्ड रोबोटिक्स. द ओनली रीज़न आई वुड एवर गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया इज़ इफ आई वुड गेट ए रिसर्च पोजीशन एट द ACFR. तो वो मेरी बात हो गई थी. और स्टेफ विलियम्स who is the guy I chose for marine robotics, क्योंकि I wanted to develop new technology and robotics and all this, and I needed to get more practical and out in the field thing. तो वो स्टेफ ने मेरे प्रपोजल को भी पसंद किया था and we were processing things. तो मैं जब नस्ट आया हूँ तो नस्ट में मैंने जाके इंटरव्यू दिया. अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और खुश रखे. आई होप इज़ डूइंग वेल. मेजर जनरल नजीब तारिक थे उस वक्त कमांडेंट, और वो सारे बैठे हुए थे उसमें फॉर्मेशन में. अपनी ब्रिगेडियर्स सारे आए हुए थे और वो मेजर जनरल साहब बीच में. और कहते हैं हाँ जी प्रेजेंटेशन दें. मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया. आई वेंट टू द होल थिंग दैट आई एम गोना मेरा प्रपोजल ये है कि आई एम गोइंग टू ACFR टू डू अ PhD एंड आई वांट टू काइंड ऑफ ब्रिंग दिस नॉलेज बैक टू पाकिस्तान एंड आई वांट टू do skills transfer, want to work on local problems, और ये proposal है, ये UAVs के साथ, all that kind of stuff. When I finished my interview, तो मेजर जनरल साहब जो है मुझसे कहते हैं very good. Okay, where the hell are you from? You look like you're from Waziristan, but you speak like an American. What the hell are you? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मेरा ये वो है, वालदा मेरी फ्रंटियर साइड की हैं, वालिद मेरे ये हैं, and this is who I am, this is how I grew up, this one. Okay, are you a fundamentalist or an extremist? I'm not joking, I'm serious. तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा, and there are some good people in our armed forces like that. I don't know more recently क्योंकि मेरी अब उनके साथ इतनी interaction नहीं है, लेकिन there were some good people back then. तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा सर, if you are talking about the American version of fundamentalism, नहीं, if you're talking about fundamentalism, I am a fundamentalist. क्योंकि हमारा दीन जो है everything is based on the kalma. तो if I forget Allah and I operate in Islam, then I'm following a meaningless path in life. So everything is based around Allah. So I'm very fundamental in my understanding on that. However, extremist, I'm not an extremist according to the Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam की जो definition है, म्याना रवि इख्तियार करो. हाँ, दूसरे अमेरिकन वर्जन में मैं हूँगा, क्योंकि आई एम प्रीटी पिस्ड ऑफ एट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. हमें थोड़े से अपने पैरों पे खड़ा होकर ज़रा वो करना चाहिए, इंडिपेंडेंस हासिल करनी चाहिए, नॉट फ्रॉम एन एग्रेसिव माइंड सेट बट फ्रॉम ए लर्निंग एंड दैट काइंड ऑफ माइंड सेट. तो he starts clapping his hands. Excellent, you're hired. I loved it, man. I just loved that guy. He was absolutely brilliant. और फिर मैंने 2 साल नस्ट में गुजारे. Extremely frustrating because of all this bureaucracy and late time पे late आ रहे हैं, ये वो. But they were some of the most gratifying years of my career. अच्छा, how come? Because I was working for my country. And I felt like I'm producing something, no matter how small, how big. I got to work on things. I got to go and present papers. मैंने अपने papers लिखे थे. I did everything on my own, and I went abroad presenting papers and doing things. और लोकली हम लोग AUVs, एरियल व्हीकल्स के ऊपर काम कर, ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहे थे, ये वो. एंड इट वाज सो गुड क्योंकि अपनी फौजियों को अपनी वर्दी में देख के, अपनी इन आवर कंट्री अपनी AUV को उठा के या ड्रोन को उठा के अपने फौजियों के ट्रक में डाल के टेस्ट करना. इट वाज जस्ट फन. आई वाज जस्ट लाइक आई एम वेयर आई नीड टू बी. एंड आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मेरी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है वो नॉर्मल पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि आई कैंट टेक excuse my language, but I can't take shit. ठीक है, तो I excuse my language, but it is what it is. ठीक है, and ऊंच नीच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है. I never ever and I used to wear those clothes just पाकिस्तान, बिल्कुल जैसे कोई लेबर क्लास होती है उस तरह के कपड़े. I mean, not dirty, clean, but when they see you in shalwar kameez, they always think you're a labor. And so they would talk to me in that way. And they would give me the opportunity to show them that not everybody who wears shalwar kameez is stupid. Yeah. ठीक है? Stop stereotyping. Yes, exactly. तो वो मैंने, anyhow, long story short, I enjoyed it a lot. I had a very good time. But then I got my PhD. मेरा वीज़ा आ गया था. I was put on security clearance. और मेरी security clearances वाले चक्कर शुरू हो गए थे. Once I got into Nust and Robotics, अब जब भी बाहर जाओ ना, तो अभी भी मैं security clearance हो रही है मेरे ऊपर. Even though I've been in the US for 5 years, and I go to renew my visa, they put me again on security because of my PhD. अच्छा. And my background of being a Pakistani.
But despite all that, I've managed. You still have a Pakistani passport? I have a Pakistani passport and I have an Australian passport. And my security clearance is happening on my Australian passport for the second time. Acha. As an Australian, going on an Australian E3 work visa to the United States. So उसके ऊपर भी करेक्ट करके उन्होंने कहीं ना कहीं आपको डाल दिया है. सर वो नाम है, या तो मेरे नाम में कुछ है या तो पता नहीं कुछ है, या तो कोई बंदा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता. But you mentioned the PhD की वजह से डाला. Why? What was the PhD about? Sir, so I wanted to get away from molecular biology. I wanted to get away from the desk. तो वो जो मेरी कमांडर जुनैद के साथ बात हुई थी about that. So I wanted to develop something in the underwater side. I wanted to get into it seemed exciting, marine, out in the field. So मैंने propose किया था that I was going to build an absolute positioning device like a GPS underwater, because GPSs don't work underwater. And I actually came up with a pretty good damn proposal of using geomagnetic parameters. You know how turtles migrate from one island in the world to all the way to the other end of the world? They purely use geomagnetic parameters. Geomagnetic field strength, inclination angles. नहीं, so they're able to, they're able to localize. Is there like a sense that they have? जिससे हम sound को कर सकते हैं. Magnetic field की जो parameters है ना, they can sense it. So they can sense the geomagnetic field strength and और वो किस एंगल पे कट करी है दुनिया को. आपको पता है ना, दुनिया की अपनी एक magnetic field होती है. तो they can sense it, and that magnetic field is distributed in quite a unique way, because you can uniquely identify a single position around the world. Interesting. So I wanted to convert that into actually a device. So my supervisor loved it. But when I went there, 2 साल मैंने उसके ऊपर काम भी किया, पेपर भी छापे. When I went there, उसने कहा, I love your proposal. It's amazing. But why don't you work on what I'm funding? What I'm getting, funding for. And I wanted to run away from that because that was more machine learning driven, right? मैं चाह रहा था मैं ज़्यादा फील्ड की तरफ जाऊँ. तो वो मेरा थोड़ा ज़रा नीचे आ गया जज्बा. And I struggled for a couple of years to re-identify what problem I'm going to be working on. But finally, I got back into the thing, and third year, ये भी बहुत बड़ी कहानी है. I don't know if we have time for everything, but there's a lot of very interesting things. So I, in my third year, finally defined my PhD problem. In the third year? Yes. And this is something I want to tell everybody, right? If you're not passionate about something, it won't happen. If you're passionate about something, there's always vacancy for you at the top. Always vacancy at the top. What does that mean though? I mean, for a lot of people, for a lot of young people, they're like, यार ये आजकल ना hustle culture में passion बेचा तो बहुत गया है, but what is passion? Like, how do you even define? वो कहते हैं कि यार, what should I do? For me, find your passion. How do I find my passion? For me, right? I get passionate when something leads me to my purpose. So do you think it is what makes you excited? What gets me extremely excited? और जो originally आपने energies की बात की थी कि stuff that drives your energies rather than stuff that depresses you. Yes. I'll tell you this. 2004 में मेरे supervisor ने मुझसे एक सवाल पूछा. कहता है, you're 22 right now. What picture do you see in your head when you're 50? Mike Bain asked me that question. I said, I don't know, man. What the hell? You're asking me such a deep question. He's like, well, he was asking me, where do you want to go in life? And I said, I don't know. I want to create a computational model of the cell, or I want to create an artificial brain, or just set up मैं पता नहीं क्या वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, चांद से तारे उतार के ले आऊँगा. I wanted to do something big. मैं चाह रहा था कुछ बड़ा करूँ. तो कहता है, okay, well, if you want to go down that track, let me lay it out for you. This is my field. You're going to spend 10 years doing multiple postdocs at almost no salary. Then you might get a chance at a academic position as an assistant professor somewhere. And he was talking about competitive universities. And then you're going to spend 10 to 15 years trying to get grant funding to get into associate professorship so that you can manage more students. And then finally, when you're 50, you might get into, or 45, you might get into full professorship, or, average track. I don't remember the exact ages. And then maybe after writing 100 papers, you might have like a 0.0001% chance of winning a Nobel Prize. Mike, I don't know, man. That sounds hideous. Too much hard work. I think I need something else. So he said, the world is your oyster. You are very young. Go and explore. What do you want to do? तो उसने जब वो सवाल पूछा था ना, उसी दौर में मेरी दादी का भी इंतकाल हुआ था. तो I started getting very close to Allah.
because I was for the first time confronted with the concept of death. I'm not going to go into too much detail, वरना ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा. But it was a very emotional and spiritual experience for me because I couldn't stop. बस मुझे ये पता है कि मैं जब मुझे खबर मिली थी I was in Australia और मेरी दादी ने मुझसे जाने से पहले कहा था बेटा आके एक दफ़ा मिल लो और मिल लो मुझसे और पता नहीं फिर मौका मिलेगा. दादो कोई टेंशन नहीं है, आ जाएंगे यू नो बचकाना जो सोच होती है, आ जाऊँगा मैं, आप क्यों फिक्र करिए, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने whatever राइट. तो वो बस 4-5 महीने बाद मेरी बहन की मैसेज आती है कि वो चली गई हैं. एंड मैं उनकी गोद में पला बड़ा था, तो आई एम वेरी क्लोज, मैं अपनी दादी से बहुत करीब था. तो जब वो गई हैं एंड आई वाज टोटली अलोन, तो मुझे याद है मैं 8 घंटे बाद रात हो गई थी एंड आई वाज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड कोडिंग एंड आई वाज उसी लाइन पे था कोड की जो 4 बजे आई थी. रात 12 बज गए थे, 4 बजे जो आई थी मैसेज मेरी बहन की उस वक्त एंड आई एक्चुअली हैडंट मूव्ड और डन एनीथिंग. आई वाज सो मुझे पता नहीं लग रहा. तो मैंने कहा ओके दिस इज़ नॉट राइट, लेट मी गो बैक, क्योंकि मैं भी आने वाला था, मैं तो जहाज़ पकड़ के जाने वाला था. मेरे अबू ने कहा उन्होंने उनको दफना दिया, इट्स टू लेट नाउ, उधर ही रहो और पैसे ज़ाया नहीं करो और काम करो और वापस आओ. तो माई फादर इज़ अ प्रैक्टिकल गाय. तो आई लिसन टू माई फादर. मैं स्टेट तो जब 12 बजे जब मैं वापस जा रहा था तो एक दोस्त रास्ते में मिला, तो उसने मेरी शक्ल देखी. पहले तो उसने कोई भोंगी मारी, ओ यार ये वो यू नो पाकिस्तानी फ्रेंड्स. तो फिर कहता है ओए तुम्हें क्या हो गया, लाइक ही सॉ माई फेस राइट. बस उस वक्त मैंने रोना शुरू किया है और मैं चीख के तकरीबन अगले दिन तक रोता रहा. And I couldn't stop thinking because I just couldn't accept that death is something. And then I stopped crying the second I realized कि वो गई नहीं है, वो पहुंच गई हैं. अब मेरी बारी है जाने की. And that changes everything. That changes everything because now अब मौत को आप देख रहे हैं. मौत एक आपका एक है, मंजिल है एक आपकी. And you need to then be prepared and be ready. तो वो मेरा उस वक्त परसेप्शन और पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हो गया था. तो वो जो है ना यंगस्टर टाइप जो है शुगल और ये वो अनअवेयर. फिर मैं थोड़ा ज़रा अवेयर होना शुरू हो गया कि नहीं यार मैंने कॉन्शियसली जो काम करना है अल्लाह के लिए करना है. So that was a very big major event in my life. तो I'm trying to link this back to the fact कि जब मैं purpose क्या होता है. When I was 23, I had a picture in my head. And this is my vision in life. And that's it. And it has never changed since then. My vision in my life is a picture in my head, and that's all I have. I'm standing on top of the hills in front of Islamabad, Margalla Hills, overlooking to the Haripur side. और मैंने पाकिस्तानी कपड़े पहने अपने, और उस ज़माने में मैं एक सिंधी टोपी पहनता था, वो कट वाली. So वो मैंने पहनी हुई है और मैं हरीपुर वाली साइड पे देख रहा हूँ. And I'm on the top of the mountain and I'm looking to the other side. That's my vision. Now that vision means something. मैंने अपने कपड़े पहने हुए means I'm in my country, I'm free. I'm on the top of the mountain means I'm financially free. I'm free in the sense के वो जो आम बंदे की जो day to day मसले नहीं होते, I'm above that. And I'm looking to the other side, the poorer side, which means I'm there above them to help those people, to help the poor people. That hasn't changed. What that materializes into किस form or shape में आता है वो अलग का काम है. But I know that my purpose is to help people. And when I started this company in 2014, skipping quick fast tracking all to that point, a guy asked me this. A guy said, why are you doing this? Yeah, हमारी company ने उस वक्त ना we started getting featured in the media, Australian news channels पे. Bloomberg, the guy Ashley Vance, the guy who actually wrote the book on Elon Musk, और उसके साथ बड़ा टाइम गुजारा. He did the interview, he did the documentary for us on Bloomberg and all that kind of stuff. And these guys came over और मुझसे कहता है, तो एक बंदे ने मुझसे कहा, why are you doing this? वो entrepreneur, he was the entrepreneur in residence at the incubator we were at that time, or accelerator, Murudi. Telstra ka tha, which is the national telecom company of Australia. They really loved us. Australians have supported us like hell. I love the Australian community for what they've done, and hats off, kudos. I love it. For the small country that Australia is, the spirit in the Australians is amazing. So fighters and fighters. So anyhow,
उसने मुझसे पूछा, why are you doing this, man? Ben Sands, ठीक है, he ran a crazy company out of San Francisco called Meta, which he raised the highest Series B in Silicon Valley, 70 million, ठीक है. Well, it ended up in nothing anyway. So he said, why are you doing this, man? मैंने कहा, I don't know, that's a good question actually. Definitely not the money. क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एम्बिशन था कि मैं बर्फ़ से भरी हुई बाल्टी के अंदर आम निकाल के ना मैं उसमें खाऊंगा और अम्मी अब्बू के साथ रहूँगा. ये मेरा था बस. मैंने अम्मी अब्बू के साथ रहना था जब तक वो ज़िंदा है. वहाँ मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे वालिदैन ने सब कुछ किया है मेरे लिए. आई वॉन्ट टू बी विद दैम एंड कीप दैम हैप्पी. एंड तो उसने मुझे कहा कि बट यू डोंट केयर अबाउट मनी. आई वुडंट गिव अ डैम अबाउट मनी. I own nothing, and even to this day, I'm 41 now. I still own only one suitcase with my clothes being 10 years old. ठीक है. वो मुझे बेगम डांटती है तो मैं करता हूँ. And I literally own nothing except 2 horses, which I love to death. But that's it. Back in Pakistan या back in Pakistan. Right. Back in Pakistan. देसी घोड़े. हम पाकिस्तानी लोग हैं. हम जिधर भी रह लें हमारे अंदर खून पाकिस्तानी है. Right. हमारा जज्बा भी पाकिस्तानी है, दिल भी पाकिस्तानी है. हम सबको अभी जितनी भी PhDयाँ कर लें, I am through and through. I love my country. मुझे बताएं, you did your PhD in 2010? हाँ. Right? नहीं, I finished it in 2013. I submitted my thesis and then I got my degree in 2014. And what was the final specialization essentially? So, okay, sorry, I got carried away. I did a PhD in marine applying machine learning to marine robotics. So basically, computer science ही core थी, but it was a marine robotics PhD. Right. And then out of the School of Aerospace Mechanical Mechatronic Engineering. Right. And then 2014, when you started your company, Abyss Solutions, I believe. Yes. No, I started a postdoc immediately after in mining. So I worked with Rio Tinto Center for Mine Automation. ठीक है. अच्छा. So basically, मेरी जो PhD थी, it was in making so we used to survey large areas of the ocean, and it was a completely disconnected vehicle. It was completely autonomous. अच्छा. Drone flying by itself. या एक दफा पानी में चली जाए ना मशीन, फिर कोई connection नहीं होती. Right. It was just some acoustic signals. So this drone was underwater. And we would survey 20-kilometer areas, 20-kilometer distances और ये और वो. और ये आहिस्ता-आहिस्ता सर्वे करके एक sort of large it would come back to the point data point के अंदर ऐड कर रही थी जिसके अंदर वो survey it would collect data and would come back up. Okay. ठीक है. तो my goal was to make it intelligent enough because sometimes we would be surveying 10 kilometers. Being out at sea is expensive. It costs vessel time. ये वो. तो मेरा काम ये था कि I need to make the vessel. I need to make the vehicle intelligent enough so that it doesn't come back with 10 terabytes of data, which is just seagrass or sand. We want to monitor reefs. We wanted to map the marine habitat. तो हम लोग कोशिश ये करते थे कि इसको intelligent बनाए so that it knows by itself. So real time पे basically useless data purge करेगा और वो सिर्फ useful data को. So वो जा रहा होगा, वो कहेगा, oh, I see sand over here. This isn't interesting. My mission is to go and look at more interesting areas. I think मेरे ख्याल में उधर रीफ होगी. So let's go explore that area. Exploration missions थे ये. ठीक है. It was adaptive exploration. How much of the ocean has been explored till now? Because 70% of our world's surface is covered by water. Yeah. 95% of the oceans are unexplored. मतलब मुझे बड़ा फैसिनेटिंग होता है कि हम मरीख की बात करते हैं कॉन्स्टेंटली बैठकर. सर मैं आपको बता रहा हूँ और हमें कुछ ₹1.5 का पता ही नहीं है. नहीं, कुछ भी नहीं पता है. It is lesser people have been to the bottom of the ocean than to the moon. ठीक है. And I've been fortunate enough to do a bit of seafaring, but क्या कहते हैं, I am telling you, and don't think I'm crazy, scientifically there's no proof to negate that there are no krakens in the ocean. It is that unexplored. Interesting. Do you think as someone who's really worked on the oceans, do you think there are maybe hundreds, potentially thousands of species that we haven't even discovered? Yes, of course. Very realistic. You haven't even seen 90% of the world's ocean. ठीक है. You haven't even seen it. How do you explain them? मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि I was part of one of the expeditions up in the Caribbean. हमें बेसिकली जो डॉक्टर बॉब बेलर्ड हैं उनकी एक वेसल होती है कॉल्ड नॉटलस. ठीक है. सो इट्स वन ऑफ द 2 एक्सप्लोरेशन वेसल्स इन द वर्ल्ड. डॉक्टर बॉब बेलर्ड इज द गाय हु फाउंड द टाइटैनिक. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू सेल विद हिज टीम. ठीक है. एंड आई सेल्ड टू ग्रेनेडा. आई गॉट ऑन द वेसल और मैंने
कैरिबियन में भी हमने एक्सप्लोरेशन की थी ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट्स बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर लाइफ, वी आर एक्सप्लोरिंग टू फाइंड लाइफ. तो हमने हाइड्रोथर्मल वेंट्स के इर्द गिर्द वेंट्स होते हैं, मेथेन सीप्स होती हैं, दैट्स वेयर लाइफ टिपिकली एक्यूमुलेट्स अराउंड. ठीक है, वरना तो ओशन सहरा की तरह है, बिल्कुल खाली. अच्छा. हाँ, मतलब लाइफलेस होता है. तो इट लाइफ कम्स अराउंड वेयर ऑक्सीजन इज. तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं उनके साथ जब सेल मैंने किया था तो वी वेंट ऑफ इनटू द अटलांटिक एज वेल, ऑफ द कोस्ट ऑफ ट्रिनिडाड टोबैगो. 1 महीने का हमारा मिशन था एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड इट वाज अ टेलीवाइज थिंग. और हर उस पर मैं कहता था आई एम पाकिस्तान. जब वो मेरी शिफ्ट होती थी ना, 2 शिफ्टें होती थी, 4 घंटे की, 8 घंटे की पर डे शिफ्ट होती थी. आई थिंक मेरी एक सुबह की शिफ्ट होती थी और एक रात की शिफ्ट होती थी. सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट देयर वाज अ 12-hour डिफरेंस बिटवीन द 2 शिफ्ट्स. नहीं, 8-hour डिफरेंस बिटवीन द 2 शिफ्ट्स. तो मैं बेसिकली हम लोग when we sailed down, we were chasing methane bubbles. हम लोग एक बबल ढूंढते थे at the surface of the Atlantic and we tracked those bubbles down to 4 kilometers. ठीक है, all the way to the bottom of the ocean using our ROV, which is a huge ROV, बहुत freaking multi-million-dollar ROV थी, Hercules. ROV stands for? Oh, sorry. Excuse me. Thank you for asking that. ROV is a remotely operated vehicle. Basically, आप समझें आपके इस पूरे कमरे की आधे साइज के बराबर थी वो. अच्छा, it was like huge. A big machine with arms in it. Arms, ठीक है, propellers, and it's like a drone, underwater drone. But purely like human free. It's purely human free. Surface से real time data transfer होके आप उसको हम लोग शिप पे control कर बैठे रहे हुए हैं. हैं. Autonomous नहीं है? Autonomous नहीं है, tethered है. हम कंट्रोल कर रहे हैं. हमारी पूरी एक मतलब वो क्रू है बैठी हुई ना ब्रिज पे. हमारा पूरा ब्रिज तो ऊपर होता है जहाँ वो कैप्टन्स वगैरह होते हैं, फिर हमारा एक वो कंट्रोल रूम होता है. राइट. तो वो 10,000 स्क्रीनें लगी होती हैं. How interesting though that it's like a video game in real life. Like was it really as exciting as I'm imagining it to be? Oh, it was extremely exciting क्योंकि हम लोग 4 घंटे सिर्फ नीली स्क्रीन देख रहे हैं. And then all of a sudden 4 kilometers later, 4 hours later, bang, descent complete हुई है, you land on the ocean bed, ठीक है, and then you're like looking around. Yeah, we chased the methane sea bubbles, it came from here, so there must be some life around here. Then you're going through these dark caverns, काली काली वादियाँ हैं, अंधेरी अंधेरी, कोई इंसान आज तक उधर नहीं गया. And then all of a sudden एक आधे पौने घंटे की एक्सप्लोरेशन के बाद या 1 घंटे की, we turned upon this completely football field size jungle. अच्छा. ऑफ लाइफ, जिंदगी. क्यों? वहाँ वो मैथेन सीप्स थी, तो नीचे से मैथेन निकल रही थी, उसके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते थे, उसके ऊपर क्रस्टेशियंस फीड करते थे, उसके ऊपर फिश फीड करती थी, उसके ऊपर टर्टल्स फीड करते थे, उसके ऊपर क्रैब्स फीड करते थे, शार्क्स फिर रही थी, मछलियाँ होती थी, ट्यूब वर्म्स नजर आती थी. So it's all driven by methane. All around that. So what happens when the methane stops coming? At some point. So life तो die हो जाएगी ना. मतलब basically उधर आपको life मिल रही है क्योंकि there is some microorganisms that are able to digest that. Yeah, but that's what I'm saying. Methane एक limited supply में कहीं पड़ी हुई है नीचे. हाँ, मर जाएगी. वो eventually सीप कर खत्म हो जाएगी, या ड्रिल होके उसमें से गैस निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगी उधर, और फिर लाइफ खत्म हो जाएगी. That's it. माइग्रेशन तो होती रहती है. अब आई एम नॉट अ मरीन बायोलॉजिस्ट, तो मैं उनकी माइग्रेटरी रूट्स और इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इट वॉज वन हेल ऑफ अ साइट. क्योंकि आज तक, अच्छा मज़े की बात है, जब मैं पिच डेक बना रहा था ना इन्वेस्टमेंट के लिए, एक तो उन्होंने कहा यार इसकी तस्वीर लगाओ अपने मिशन की ना, तो मैंने कहा हाँ मैं गूगल करता हूँ, मेरे पास तस्वीरें नहीं है. आई couldn't find a single picture online and I'm like oh yeah of course, कैसे मिलेगी उधर, आज तक कोई गया ही नहीं है. तो मैंने अपने मिशन के वीडियो से ना एक फ्रेम निकाल के ऐसे गंदे रेजोल्यूशन की वो निकाल के उसमें लगाई थी. But it was amazing क्योंकि उधर कोई भी नहीं है. और एक होता है ना बंदा ख्वाब देखता है एक्सप्लोरर होने का, तो दिस इज वन प्लेस यू कैन क्लेम कि यार दिस इज वन प्लेस आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट नोबडी इन हिस्ट्री हैज एवर टच्ड. यस सर. और मैंने पूरी क्रू से पूछा था, मैं को पाकिस्तानी तो नहीं आया पहले. मैं क्या
नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं, we don't know of any. This was also the same crew that rescued the Syrian Turkish fighters that sunk in the Syrian sea जब वो war नहीं हो रही थी. Right. मेरा supervisor was actually leading the excavation mission. Interesting. उनको rescue किया था. I mean, this is a very specialized crew. तो हम मेरा जो academic network था, this is why I wanted to go to ACF, was very strong. Right. Very strong. Carnegie Mellon के साथ, Woods Hole, और यही सारे लोग हैं जिनको हम कंपनी में लेके आए हैं. And that's why. So tell me about the company. I mean, you're doing molecular biology at one point, then you're doing. Just before I get into that, though. Yeah. Just before I get into that, I think the important thing is कि अभी मेरा ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च का एक्सपीरियंस हो गया था. एकेडमिक अंडरग्रेड में भी मैंने PhD लेवल का प्रोजेक्ट किया था. मास्टर्स में भी रिसर्च हो गई थी. मेरी ट्रेनिंग जो थी बड़ी यूनिक हो रही थी. Because nobody usually goes through these many rounds of tutelage. So right after my PhD, I started my postdoc. So I took the same technology and applied it to mining. So Rio Tinto Center for Mine Automation में मैं काम कर रहा था, and I was working on a completely autonomous coal mining rig. And again, purpose आया, मेरे supervisor ने मुझे सही pump किया, कहता है, well, you know what, we got this problem, we can't solve it. And if we can solve it, we're going to save so much, money, so much blah, blah, blah. इतनी कोल की पूरी एक तय ज़ाया हो रही थी. और ये effectively, again, simplify अगर मैं करूँ, तो ये concept क्या था कि miners को भेजने के बजाय मशीन ये basically explore करते थे ना, ठीक है? Explore करने में जियोलॉजी को समझने की कोशिश करते थे कि हम कोल को किस तरह एक्सट्रैक्ट करें. और उस एक्सप्लोरेशन में बहुत सारा वो जियोलॉजी उनको समझ नहीं आती थी. दे वुड ड्रिल लाइक हंड्रेड्स ऑफ होल्स बिफोर दे कुड फिगर आउट हाउ टू ड्रिल दिस एरिया. उसमें पूरी कोल की या कोयले की पूरी एक तय जो है वो ज़ाया हो जाती थी. सो उन्होंने कहा कि यार अपनी कोई AI लगाओ इसमें, ताकि ड्रिल जो है ये डैमेज ना करे और पूरी ऊपर की तय हम लोगों को मिल जाए. आई मीन देयर आर कमर्शियल आउटफिट्स, सो दे वांट टू मेक सेव मनी, राइट? In 1 month, they hired me for a 2-year postdoc. In 1 month, I solved that problem. And I brought, for that particular जो area थी जिसमें वो drill कर रहे थे, they were drilling 108 exploration holes to get the geology right before they can start drilling the coal out. Allah के फजलो करम से, and this is what happens when you have a purpose and you're driven, right? In 1 month, I used a completely alternative technique और I boiled it down to 6 holes. I even showed you can get down to 4 holes before you get. वो जो रियो टिंटो का जो बंदा था, वो मुझे अभी नाम नहीं याद है उसका, कहता है, oh man, you just saved us 5 years of money that we've spent on this damn project. That's the amount of money that you've saved us. Wow. So it was valuable for them. Yeah. But then when I went on this, फिर उसके बाद ये ocean exploration mission आया था, and then when I came back from it, ठीक है, I was handed my termination, यानी you're fired. अच्छा. ठीक है. Because they're closing the coal project. Oh, you're amazing. तुम तो बेहतरीन हो, ये हो. मैं कहा, come on, man. I put in my effort. I put in my life into this thing, and I solved the problem for you. And is that how expendable I am? Yeah. तो obviously अब वो बेचारे क्या कहेंगे? And so I quit. I lost my job, and that's मैं सोच रहा था कुछ अरसे से कि I need to get out of academia. But how was so the postdoc is, I don't know how postdocs work. PhD के बाद जो रिसर्च करते हैं ना, वो एक रिसर्च टेन्योर होता है. ठीक है. एक प्रोजेक्ट होता है, एंड दे असाइन इट टू ए पोस्ट PhD गाय. ठीक है, उसको पोस्ट डॉक कहते हैं. और वो अगर आप कंप्लीट करें उस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम को, तो फिर आप कहेंगे कि मेरा पोस्ट डॉक हुआ है. आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल पोस्ट डॉक. उसमें मैंने ये पेपर्स छापे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. और वो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं. you're working as a specialized researcher on a program. So you might have students under you, you might have other people you're supervising. So you'd gotten into the postdoc but you never completed it. नहीं, I completed it. You completed the postdoc? I completed the problem. उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गई थी. ठीक है, अब मैं पेंसिल शार्पनिंग कर रहा था रिसर्च में, एंड दे डिसाइडेड टू क्लोज द एंटायर प्रोजेक्ट. राइट. नहीं, नॉट माय प्रोजेक्ट, a whole series of projects I was a part of. उन्होंने कोल माइनिंग को ही छोड़ना था. राइट. अब ये इन बाबों के गेम होते हैं जो हम जैसे इतने जज्बे वाले इंजीनियर्स जब आते हैं समझते नहीं है, पूरी जान लगा देते हैं. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार दिस इज अ गोल्डन फ्रिकिंग केज. मुझे अपनी बिजनेस शुरू करनी है. मैं कुछ अर्से पहले से भी सोच रहा था. I really want to mention this because go ahead. नहीं आप बताएं. I really want to mention this because this is very important क्योंकि I was also starting to get sick of academia. Because your father is hardcore academic. You then end up going into academia. PhD तक आपने कर लिया, postdoc कर लिया.
अब सवाल ये आ रहा है कि यार मैं इतना अरसा मैंने इस जगह पे लगा लिया हुआ है, इट्स अ वेरी स्केरी थॉट, राइट, कि मैं अब ये मैं कह रहा हूँ मैं ये छोड़ूंगा और मैं बिजनेस करूंगा जिसका बाय द वे मुझे ग्रोइंग अप फैमिली में भी मैंने नहीं देखा एक्सपीरियंस, राइट, मैंने जॉब का एक्सपीरियंस नहीं देखा, मैंने एकेडमिक से देखा। आप सारी वो बातें कह रहे हैं जो कि मुझे सुनाई गई थी। Right, exactly, and so you're now saying कि I'm going to venture out and somehow I'm stupid enough to believe that I could be successful, right? Yeah, and this is exactly the point, right? What if I don't? Yeah. What happens if I don't? I can't do anything. I'm limited by this very constrained environment where I will never achieve that level of influence that I need to have to make an impact. That picture in my head, I need to get there. And I can't do that if I stick here, right? तो मैंने already academia को analyze कर लिया था. Science is waning out. ये मैं आपको बता रहा हूँ. I'm an expert in the area. I have a PhD. I've done research. Science is dying. What do you mean by that? Research is becoming commercialized. Fundamental research is finishing. और जो फंडामेंटल रिसर्च का जो ओल्ड स्कूल तरीका था कि यू ओपन अप अ यूनिवर्सिटी एंड योर प्रोफेसर इज़ फ्री टू वर्क ऑन व्हाटएवर दे वांट, इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर. ये अमेरिका का जो पब्लिश और पेरिश टाइप मॉडल है ना, इट्स किलिंग एवरीथिंग. यू आर ड्राइविंग पीपल टू वर्क ऑन ईजी प्रॉब्लम्स. अब जो साइंस है ना, अब जो साइंस है, मैं आपको अपनी फील्ड से बता सकता हूँ, हमारी जितनी भी फंडामेंटल नॉवल साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो 50s तक आई थी. Everything else you're seeing is recycling. टायर को निकाला, रंग चेंज किया, एक बत्ती लगा दी ऊपर, वापस गाड़ी के अंदर लगा दिया. But a lot of people said कि recent times in particularly कि we're now at a what's the word that they use? We're at the singularity moment where aided by AI and we're going to solve quantum physics and quantum computing and this is going to just revolutionize the world and in terms of innovation, right? So ऐसी innovation आएगी और वो computer aided होगी और हम तो पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे. And you're giving me a very different picture. I cannot comment on these people, nor do I know what background they come from, but that sounds like anybody who actually understands science and has done hardcore research would know that क्या कहते हैं, fundamental science is finishing. IT, technology और ये जो superficial engineering terms है ना are coming up. Fundamental science is mathematics. Discovery, opening up new areas, fundamental laws of probability. ठीक है, laws और क्या कहते हैं Boolean logic was well अब तो वो outdated हो चुका है. But neural nets, इतना नाम बना हुआ है ना neural nets का. Man, it was out in the freaking 50s. मैं न्यूरल नेट की मतलब वो पढ़ाता था, कोर बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है. So effectively what you're saying is so maybe humanity has answered those fundamental technology is on the cusp, and so where basically what we're saying is कि जी हमने वो basic क्योंकि layer of the foundation has been made, so now we're now going maybe स्पेस की कोई. सर आपको जो अभी नजर आ रहा है ना is the materialization of those fundamental concepts. Right. Yeah. That's called technology. That's not science. Science is something else. Science is discovery. Science is mathematics. Science is physics. Science is understanding nature of things. आप मुझे ये बताएं, mathematics is a very limited language right now. ठीक है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, many people might find it totally absurd, but because they wouldn't understand it or they might disagree with me, and they're more than welcome to do that. I welcome, I'm an academic, so I welcome debate all the time. लेकिन your fundamental innovations in mathematics, मुझे बताएं क्या हुआ है पिछले 20-25 साल में. फंडिंग किधर जाती है? फंडिंग मैथमेटिशियन को जाती है या फंडिंग जाती है उसको जो क्या कहते हैं, किसी ने कोई नई परटर्बेशन बना ली है AI की. I mean, when was the last? और मैं सिर्फ अपनी फील्ड के हवाले से बात करूँगा. मैं मेडिकल साइंस में बात नहीं करूँगा. न्यू शाइनी शेल्स के ऊपर काम हो रहा है. सर और कुछ नहीं हो रहा. मैं सिर्फ अपनी फील्ड के हवाले से बात. I'm not an expert in medical. I'm not an expert in telecom और खैर I mean engineering को मैं encompass कर सकता हूँ, but I cannot speak on the medicine side of things and other areas that I'm not related. I'm a computer scientist and I can tell you कि हमारे फील्ड में जो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशंस थी came up until the 50s. Were you following the superconductor drama that was happening a couple of weeks ago? नहीं, I haven't. वो जो एक कोरियन रिसर्च टीम ने एक सुपर कंडक्टर का वो निकाला कि जी वो एक
नया सुपर कंडक्टिंग मटीरियल हमने डिस्कवर किया है और फिर उसके बाद पूरी दुनिया ने उन्होंने कहा हम लैब इन्वायरमेंट्स में उसको बना सकते हैं एंड देन साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग एंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि यार ये क्या सही है ये गलत है. It's not the first time it happened out of Korea. And I've heard it happen before as well. And then a Russian this meme girl who's also a scientist, she was the first one to replicate it and she uploaded that video. But eventually, long story short, pura hafta people were just going nuts. Physics Twitter was going absolutely nuts because the implications were phenomenal. Maglev ke upar, the idea was कि 100% energy transfer है. It's not कोई energy loss नहीं है. So batteries के ऊपर, maglev के ऊपर, MRIs के ऊपर, so on and so forth. But then after a couple of weeks of excitement, they found out that it's an iteration of another form of वो. So वो जो आपकी वाली बात है ना कि after a very very long time there was some sort of excitement कि आपकी वाली अब मैं now that I think about it we haven't had सर मैं आपको बताता हूँ earth shaking discoveries that would change the very nature of how we view things, right? Exactly. What you're seeing is जो trends अब आपको नजर आ रहे हैं and I'll eventually get to our company as well. जो trends आपको अभी नजर आ रहे हैं those trends are miniaturization of मतलब iterations of miniaturization of processing power, miniaturization of sensors. You're able to do more powerful processing on platforms which are far more accessible. Basically all of this stuff is becoming more and more accessible. That's the change that's happening. The layman will consider that as science. The scientist does not consider that. I am a scientist. I am a through and through academic by background. And I can assure you, okay, all these things that you're seeing have been invented more than 50 years ago. चलो उसकी commercial viability अब आ रही है. Commercial viability अभी इसलिए नजर आ रही है because now the processing power is becoming capable, is becoming smaller, and over years, and I mean Moore's law, processing power is exponentially, you know, getting double जो भी है over the years, ठीक है? And you're seeing that. और हमारी कंपनी का भी यही विजन है कि ये sensorization, miniaturization, all of this is coming smaller and smaller. आपका 10 साल पहले मैंने पहली दफ़ा स्मार्टफोन उठाया था 2014 में. मेरे पास LG का फ़ोन होता था 2000 रुपये का. रेडियो ऑप्शन भी 2200 की नहीं ली, 2000 रुपये का लिया था. I, for the first time, picked up a smartphone and used it. And now look where we are. हर चीज़ उस पे हो रही है. Miniaturization of sensors, 3D scanning, सब कुछ हो सकता है इन पे. A couple of control systems already are available. Imagine if you put this processing power on a drone. We're not very far away from a technology standpoint that drones will be, or robots will be bringing you your coffee, projecting your presentation, doing your Skype calls, opening your car door, starting your car. I mean, instead of having, you know, Google Home as speaker or... Do you think a decade from now we'd have robot helpers at home? I don't think it's that far away. I think you can have them. Please... Being an AI guy, कोई ये ना कहे कि robots will take over the world because that's not happening. Now that's where the fundamental science hasn't happened. Why? Because mathematics doesn't have the power to express that level of or characterize that level of complexity. Mathematics is limited. It needs to grow. There needs to be fundamental... That's a mathematical problem, not a hardware problem. No. Or a software problem. Yes, it's a mathematical problem. And I mean, आप मुझे ये बताएं, can you define infinity? Can you characterize infinity? Can you characterize love? Can you characterize anger? How do you put that in mathematics? Right? Mathematics is limited. Your ability to express a concept is going to define your capability to solve problems. But some people would say that emotions is what? Emotions is the biggest weakness of our species, right? So the next super species that is supposed to rise is the one that sort of rejects emotion, and basically उनकी supremacy जो है वो logic पे based होगी. And so in that case, यानी वो मशीनें होंगी. Machine है ना, essentially. So what you're saying is कि emotions is what makes us take stupid decisions for patriotism or anger or love or whatever. Everything that we inherently connect to being human may just be, in a very dystopian sense, may just be our biggest weakness. Let me hopefully shed some light on this from my experience. Coming from this background and studying AI for a very long time, AI जो आजकल की दुनिया में आपको नज़र आ रही है is nothing more than pattern recognition. It's just drawing patterns.
It's more and more advanced ways of drawing patterns. That's all it is. Aapka background, I mean, you must have studied mathematics and you know what the Yeah, equation. I'm a computer science background. Oh, perfect. Y is equals to mx plus c. Yeah. Okay, computer science is about knowing what the value of m is and the value of c is, and then aap jo bhi x andar daloge y nikal aayega. That's machine learning. That's it. You need 2 data points to figure out the value of m and c. ठीक है? Equation of a line. ठीक है? Driving a car needs a lot more. Right. But it's all at the end of the day a function fitting. Right. That's all it is. ठीक है? And human intelligence is way beyond basic logic. ठीक है? This is very basic logic, rudimentary logic, patterns recognize करना, classification करना, तो बच्चा पहले 5 साल में कर लेता है. Exactly. ठीक है? What real human intelligence comprises of is creativity, intuition, emotions, love, ambition. How do you simulate that? The mathematics doesn't exist to do that right now. Have you followed Neuralink and what they're doing? Yeah, to some extent, but You have a fundamental idea of what they're doing. yeah. How do you see that as a sort of intersectional marriage of machine and Sir, it's human? again, it's a over just kind of glorified pattern recognizer. That's all it is. No, so but that's what I'm saying, right? You take the so humans may lack in certain areas, and so what you're saying is कि भाई मैं आपके वो जो areas हैं उनमें मैं aid करके so maybe the super species is not purely robotic, but maybe the super species is one that वो cyborg या क्या वो कहलाते हैं? Sir, now you're getting into a very interesting proposition. मेरे ख्याल में इस इंटरव्यू के बाद मुझे आपसे दूसरे एंगल से बात करने की जरूरत. Now that is a different thing. ठीक है? I never thought about that. That could be a possibility. I don't know. And you know, that's actually interesting. हमें दिमाग में आप आइडियाज डाल रहे हैं, मैं अपना वो जो है ना वो बिल्कुल क्लोज माइंडेड उससे मैं सोच रहा हूँ. But that is actually a very interesting idea, which I will think about after this. Let's revert back. Tell me about Best Solutions. How did it start? What are you doing now? Again, for context, give me like an elevator pitch. What all are you guys doing these days? Who all are you working with? What are the big names? So long story short, background jo bata diya. I started the company in 2014. Basically, we spun off the kind of ideas and research we were working on. And the reason why I was telling you about marine robotics and mining, और उसके बाद मैंने UAVs के साथ aerial drones के साथ agricultural applications के ऊपर भी काम किया है. And so basically, I come from the background of being able to apply artificial intelligence for perception and robotic perception and planning. And that's what I've been doing for the last 20 years or so. ठीक है? And so वो बाबा ही बन गए इस फील्ड में. But I have been out of touch with the research area for a while. But जो मेरी mining की postdoc थी जब वो ख़त्म हुई, so I decided I'm going to start a company. Now, here's another chapter of my life. बहुत गालियाँ पड़ी हैं. ना कभी business आती थी, ना कभी कुछ आती थी. But I knew what would happen if I didn't do anything. So I took the jump. मेरे वालिद साहब परेशान, मेरे घर वाले परेशान, my wife, मेरी मम्मी और वाइफ जो है वो मेरे साथ थे. My wife is one of the co-founders of Abyss Solutions. So when I came back from that trip in the on that vessel जो मैं आपको बता रहा था, I was so pumped up. I was like, man, we gotta do things differently. तो हम इस तरह करते हैं कि अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अपने co-founders को पकड़ा जो potential थे. I had the option of starting this company with my actual colleagues जिन्होंने indications भी दी थी कि let's do it man. क्योंकि हमारा center was like really really special. एक तो वो दुनिया का top centers में से था, ठीक है, और उधर top notch लोग आते थे और बंदे भी सारे capable थे, और we were actually generating spin-offs. Our center is actually very good at commercializing technology क्योंकि हमारी सारी funding industrial थी. तो वो मैंने सारी training ले ली थी कि problem को किस तरह figure out करना है, industry से पैसे कैसे निकलवाने, वो सारा मुझे आ गया था. प्रॉब्लम ये था कि कैपिटल कोई नहीं था क्योंकि एकेडमिक थे, पैसे कोई नहीं थे. तो मैं मसूद के पास गया, मसूद नक्शबंदी जो हमारा एक को फाउंडर है, पहले उसके पास गया. मैंने उसको कहा कि बट आई डिसाइडेड टू चूज फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम ओरिजिन. राइट. ठीक है. आई wanted to have that. Right. I don't know, maybe it was
chemistry. There's a lot of things you don't know why you do them, but you just do them. Allah Ta'ala आपके दिमाग में बिठा देता है. Natural होता है या Natural होता है. I just felt this would be safer. Where were these people from? Masood was from Afghanistan. वो पाकिस्तान में रह के गया था 10 साल, and then he migrated eventually to Australia at the age of 15. Interesting. So he left the country during the war period. Right. I was very 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 close with him. हम लोगों ने बहुत ये co-founders हमारे बहुत करीब थे. Right. अब क्या कहते हैं, अब तो मसूद नहीं है. He ventured off into some other interest in his life, which is natural. I mean, you can't keep doing things forever. फिर एक इब्राहिम था. सबसे पहले मैंने अपनी बेगम को कन्विंस किया. मैंने कहा यार बेगम होगी तो 24 के बजाय 48 घंटे होंगे. And she will understand. And I wanted her to be part of it. What was her expertise in terms of? She's graduate from Pakistan, Agriculture University Peshawar. Economics में उसने अपनी की थी, और मेरा ये था कि उसने statistics में की थी, economics and statistics. So she did have a technical background, but she took on most of the financial things. Right. Early financial tax rebates, ये सारी चीज़ें, grant applications, ये सारी चीज़ें वो करती थी. Right. At some point when operations were very simple, उसमें वो help करती थी. But that's the kind of side where she stuck, and that was always her thing. Masood and me were more on the sales side. I was more on the vision side, and Ibrahim was on the technical side. Right. Ibrahim was one of my co-founders who also I approached. तो मैं मसूद के पास पहले गया, मैंने कहा, hey man, I have this idea. I think the world is going to change. I think everything is going to get sensorized, and robots are nothing but mobile sensors. It's all about perception, and that's where the world is going. Yani if the robot can be smart enough to deal with you in the field or out in the open and do things by itself and have enough intelligence to make adaptive decisions based on the environment and circumstances and your condition, it's a smart robot. आजकल के robots में ये नहीं है. नहीं है, कहीं भी नहीं है. कहीं भी नहीं, अभी भी नहीं है. Boston Dynamics. Yeah, that's just hardware. ठीक है? That's just hardware, and they're following dumb waypoints, executing pre-programmed instructions. I don't see robots out there that are actually out there in the field saying, oh, I see a problem on the pipe. मेरा काम तो था कि मैं वो 10 अगली चीज़ों को देखूं, लेकिन यार ये पाइप को सही करना ज़रूरी है. What should I do? Should I go back to the thing or base station or alarm raise करूं, or should I just spray paint it or something? या ये coating ख़राब हो रही है, इसके ऊपर rust stopper लगा दो. You know, making that level of sophisticated decision making and planning in real time. क्यों नहीं है ये भी? सर अभी तक टेक्नोलॉजी आई नहीं थी उसकी. हम रिसर्च कर रहे थे 10 साल पहले इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और अब प्रोसेसिंग पावर आ रही है. सो इट्स जस्ट टाइमिंग की बात है. इसलिए और अब हो जाएगी ये, आपको लगता है 10 साल तक हो जाएगा, शायद 5-10 साल तक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा. डू यू थिंक डम टास्क्स रोबोट लाइक सारे रोबोट्स पे चले जाएंगे? You know, बेसिक टास्क्स. हमारा तो मकसद ही है, हमारी कंपनी जो हमने garbage collection, exactly, you know, stuff that sometimes you look at and you're like, yeah, that's a waste of human intellect. Yes, exactly, that's what we are here to do. That's exactly the vision of this company. कि हम लोगों का तो ये है कि जो offshore platforms हैं, for example, ये mission Mars में जो हो रहे हैं exploration, they're already unmanned, right? You can't send wherever you have difficulty sending humans because of risk or because of scale or because of remoteness. You need to send in robots to do the thing. Otherwise, practically possible नहीं है चीज़ों को run करना. So हमारी कंपनी का vision ये है that we want हमारा, मैंने जब ये कंपनी सेटअप की, I'll get back to the founder story in a second, but the vision was, it wasn't as refined back then, but the vision was to, the purpose is to protect and conserve the world's most precious resources. The vision is to be the pioneer in autonomous systems. यानी जैसे Intel Inside नज़र आता है ना आपको हर कंप्यूटर के अंदर, आपको हमारी चिप नज़र आएगी हर फील्ड रोबोट के अंदर. We don't make drones. We program them to do things. ठीक है? So you're going to see the smarts on the robots are going to be ours. Would you say कि you're right now at the, so I mean Intel है ना, 10 और लोग चिपें बनाते हैं, but Intel is really at the forefront. Do you think Abyss Solutions right now is at the forefront of your space? Yes, we are. And I'll give you examples of why we are. Sometimes मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये कैसे हैं. यार मैं पाकिस्तानी गली नंबर 12 से 410 से मैं कैसे. मेरा सवाल इस वजह से, मेरा सवाल जो है ना, एक inherent insecurity, हाँ, and एक inherent जो हमारे अंदर inculcate की गई है ना कि यार
पैदा भी आप पाकिस्तान में हो? अच्छा, आपने टाइम भी पाकिस्तान में गुजारा है? I don't know, man. How are you at the top of that field? Like I don't know. You know, one guy put it beautifully. Yeah. ठीक है, one guy put it beautifully. उसने कहा था, Nasir, despite your best efforts to screw this company up, it's the best one I've seen. And we are one of the only few companies that still survived from our days in the accelerator. Interesting. It's I don't know how, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी being able to be where the technology is. हम लोग उधर होते नहीं हैं. मेरे सेंटर में पाकिस्तानी बहुत कम थे, ना होने के बराबर थे. पाकिस्तानी आपको जो है ना टिपिकल जगहों पे मिलेंगे. अगर हम लोग इस तरह की जगहों पे होना शुरू हो जाएं और हम लोग उधर you know we've lost the ability to dream. I actually feel sometimes जब मैं विजन प्रीच करता हूँ, हम लोग ख्वाब देखना भूल गए हैं. मजबूरी और मुश्किलातें और ये सब कुछ की वजह से हम लोग समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं. 2200 साल 400 साल की ये जो ग़ुलामी हमने गुजारी है, उसकी वजह से हम लोगों के अंदर एक सेल्फ सफिशेंस ख़त्म हो गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है. बट यू नो, वो शिकवा में अल्लामा इकबाल ने किस तरह बयान किया है. आई मीन शिकवा इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग, यू नो. उसको लिटरली लें तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, उसको मेटाफोरिकली देखें तो ही इज़ एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चंस टू पाकिस्तानीज़ या टू मुस्लिम्स के हम ये करते थे तब, मतलब हमने किसने बुझाई है आतिश के दाए ईरान की, किसने बुझाई है? इट वाज अ 5000 year old. Greeks, Romans couldn't defeat the Persians. किसने बुझाई है? हमने. वही सहराई चूहों ने, जिस as put in by the Persian emperor, कि तुम सहराई चूहे हो, तुम कहाँ से आगे मुझे वो धमकियाँ दे रहे हो और बातें कर रहे हो. And we as Muslim, हमारे आबाओ अजदाद ने वो आग बुझाई है. ठीक है, we thought differently. We don't think like that anymore. Where is that confidence? Where is that strength? It came from our belief in that one supreme God for which purpose we existed. वो जैसे कहते हैं ना अल्लामा इकबाल के तपते हुए सहराओं में भी हम लड़ते थे, हर मारका राह में हम लड़ते थे. मतलब मैं एग्जैक्ट शेर व शायरी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो किधर है वो जज्बा? अब सिर्फ एक वो बुलबुल रह गया जो जिसका वो है तरन्नुम, ठीक है, और फूल झड़ गए हैं. वो किधर गया है? वो मुदारात नहीं रही, वो कुछ भी नहीं रहा. वो आए जो थे वो भी चले गए. अब हम किधर हैं? अब हम कौन हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? हम लोग वो नहीं हैं जो हम थे. हम अपने आप को उनसे वाबस्ता करते हैं, लेकिन नहीं है हम वो. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस तरह नहीं सोचते. मैं जब ये बातें पाकिस्तानी यूथ से करता हूँ, and I've been doing this for a very long time, I feel it falls on deaf ears. I feel I'm fighting, मैं अपना दीवार से अपना सर पटक रहा हूँ, क्योंकि उन बेचारों की गलती नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि आप कुछ कर नहीं सकते. उनको खुदा के अंदर जो यकीन है उनके दिलों में उस तरह बिठाया नहीं गया कि जब खुदा सा कुरान में आयत लिखी है, हम कुरान को तो समझते नहीं हैं. कुरान में आयत लिखी हुई है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ हो तो तुम हमेशा कामयाब रहोगे, और अगर तुम्हारे साथ पूरी दुनिया हो और मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते. मतलब अल्लाह ने ख़ुद कहा कि इट टेक्स वन मैन टू चेंज द इंटायर वर्ल्ड और वन वुमन. इट इज़ आवर बिलीफ एंड आवर अकीदा. And if we keep Allah in front of us and we खौफ खुदा हो और उसकी वो हो, तो anything is possible. मुझे अभी भी याद है 2 हफ्ते के रनवे रह जाते थे, 30-40 हमारे बंदे होते थे. you know, 2 हफ्ते के पैसे रह गए अकाउंट में. ओ बिजनेस जो है पूरी सीनियर मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है. What the hell are we gonna do? ठीक है, बिकॉज वी वर मुस्लिम्स, हमारे बाकी तो सारे गोरे थे. तो मैं और इब्राहिम और मसूद वी वुड टर्न अराउंड, वी वुड लुक एट द कैश फ्लो. Not again. What do we do, guys? What do we do? God will take care of it. What? Yeah, I know you don't get it. You'll get it.
And eventually कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता था. So you know when you're cornered and you rely on your faith, that's when you see your strength. Makes sense. Nasir bhai, we're at the 1 hour 40-minute mark, and I know that you have to go as well. I would love, first of all, कि अगर आप कर सकें, I would love to have a round 2, जिसमें मैं ज़्यादा आपकी thoughts ले सकूँ on the industry, on innovation happening in this space. There's just इस साल तो it seems like the world is changing, just one new thing after the other, and I really love your insights. So if you're ever in town again, would love to have you over, if you'd allow it. Sir, I would be honored, and if I have knowledge that can be beneficial to the youth of Pakistan, it is my duty and my responsibility to disperse it. So I would be honored to do it for our country and for the good vision that you have happening over here. Thank you, sir. And एक क्वेश्चन मैं आखिर में छोड़ कर जाऊँगा, जो कि मैं नॉर्मली हर गेस्ट से पूछता हूँ. If you can share your insight on that. You've lived a very interesting life, very unique, in and out of Pakistan at a very different time, 80s, 90s, बड़े थोड़े पाकिस्तानी जो थे वो ऐसे थे. Then you lived in many different cities within Pakistan as well, फिर Australia, फिर US, I'm sure traveled around, I mean explored, you're the only explorer from Pakistan जिन्होंने oceans की depths भी जाके देखी हुई हैं. इस सारी knowledge and insight को लेने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के पाकिस्तान को देखें, जो पिछले 30 साल हैं उसको अंडरस्टैंड करें, और जो आपका काम है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न्स रिकग्नाइज करके अगर मैं एक्सट्रापोलेट करने को कहूँ आपको, तो आप 2050 का पाकिस्तान कैसा देखते हैं 27 साल बाद, विदाउट एनी इफ्स कि अगर हम ये कर लें तो ये हो जाएगा, विदाउट टेलिंग मी कि यार हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो मैजिकली कुछ हो जाएगा. Just looking at what you're seeing right now and really extrapolating that and giving me a sense of how you see Pakistan in 2050, 27 years from now. If I take what our company is intending to do outside the picture and look at how things are going, that is a different picture. If I put our company into the picture, that is a different picture. So let's take the abyss out of Pakistan for now, and let's just look at how it's going. So Pakistan is not a conducive environment at the moment. I hope I'm not being too blunt, but it's not a conducive environment for development. It does not entice investment. It does not entice commercialization and growth. It's period. ठीक है. Pakistan needs to seek new. पाकिस्तान के मसाइल बहुत जल्दी हल हो सकते हैं. मेरा जो फोकस है पाकिस्तान की तरफ वो है रेवेन्यू जनरेशन. ठीक है, ये सियासी पार्टियाँ ये वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, वो हमारी नेचर से निकालना मुश्किल है. वी एटलीस्ट शुड कम टुगेदर फॉर रेवेन्यू जनरेशन. We cannot keep taxing our people and kill the only asset Pakistan has. We need to understand our most precious asset is 220 million people that can export hell loads of services. We need to focus on training them up to create enticing, cost-effective outsourcing, outshoring things. अब ये कोई मैं पहला बंदा नहीं हूँ जो ये कह रहा है, लेकिन I am reminding everybody कि revenue generation is one of the core fundamental priorities of Pakistan right now. हम लोग जिस तरह इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको आग नहीं लगा रहे, हम इसको फ्यूल नहीं दे रहे, हम इसके अंदर जान नहीं डाल रहे. अगर इसको हम ये कर लें रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फ्रॉम एन AI एंड रोबोटिक्स परस्पेक्टिव आपने जैसे कहा वेयर विल पाकिस्तान बी इन द फ्यूचर, I have thoughts on without the abyss picture in Pakistan. If we continue like this, I don't think we're going to be very far from where we are today. Pakistani private market, consumer market is very, very healthy. अगर उसके अंदर spending power बढ़ जाए, पाकिस्तान की जो consumer market है is a bull market. कराची स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है, you know how it operates. ठीक है. What I'm telling you is इसको जो है ना हम जितना पंप कर सकते हैं और फ्री मार्केट की तरफ लेके जाएं. ठीक है, फ्री मार्केट की तरफ. इसकी वजह से काफ़ी हम लोग बच सकते हैं. हमारे प्राइवेट मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल. पाकिस्तान जिंदा दिल कौम है. अगर इनको
खर्च करने के तरीके दिए जाए ना तो खर्च करेंगे, बट खर्च करने के लिए जब कुछ होगा नहीं तो कैसे करेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ की होंगी नहीं तो ब्रेन ड्रेन होगा तो जो रह जाएंगे वो पाकिस्तान को विशेष साइकिल में और नीचे देते हुए जाएंगे। मेरी ये है कि रेवेन्यू जनरेशन नहीं आएगा, पाकिस्तान 2050 में ऐसा ही होगा बल्कि बदतर होगा। And then if you were to put Abyss solution into it. हाँ ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अब जो होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हमने जो नियत की है वो ये Abyss Pakistan's vision. Now Abyss Pakistan, we have offices all across the world. ठीक है, Right. I didn't tell you the story of Abyss. 7 countries or? We from Sydney, Houston, Rio, Aberdeen, UAE, and now Alhamdulillah Dhahran, Saudi Arabia, Right. Islamabad. Very cool. ठीक है, so I don't know how many that is, but you got that right there. तो अब and we've come a long way, और ये स्टोरी मैं आपको अगली दफ़ा बताऊंगा कि Abyss क्या बन गया है डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स टू स्क्रू इट अप, लेकिन अल्लाह की जिस चीज़ में शान हो या उसकी बरकत हो वो चीज़ चलती है। सो if Abyss is in the picture, हमारा Abyss Pakistan is the only subsidiary with a separate vision. Interesting. Our vision is to become so embedded in the future core economic infrastructure of Pakistan through robotics and AI that no decision can be made without our influence. It is a very bold and brave statement, but I'm not saying that as a threat to anyone. I am saying this as a core part of Pakistan's economy that we will build. While India is busy still offshoring IT, I and my team intend to equip young Pakistanis to build Pakistan for tomorrow, to make it an export center for robotics and AI. Interesting. ठीक है, and I am working day and night to do that. मैंने जब पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम अपने बोर्ड के सामने लिया था, people started laughing. Oh really? Are you? Why don't you go to India? मैंने कहा come on, मेरी शक्ल देखो, मैं इंडिया जाऊँगा तो and they're like oh yeah that makes sense. तो Pakistan is a severely underutilized market. Lots of passion, lots of capability. इसमें इस स्ट्रगल में इस मुश्किल हालात में हम जैसी कंपनीज़ को वी लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। बाकी कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, हम जैसी कंपनीज आगे टैलेंट अट्रैक्ट करती हैं एंड देन वी एक्सपोर्ट देयर सर्विसेज। आपको पता है कि जो भी ग्लोबल ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं डिलीवरी के, दे ऑल हैपन थ्रू G10 PTET बिल्डिंग इस्लामाबाद। इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में, and I'm just going to follow up on that because it's an exciting vision. A lot of people have that vision. I've really focused on IT services and export of services. One of the major problem that we've seen facing Pakistan these days is brain drain, जिसकी वजह से जो टॉप टियर टैलेंट है वो इमीडिएटली मिडल ईस्ट मूव कर जाता है या सो ऑन एंड सो फोर्थ मूव कर जाता है या वो फ्रीलांसिंग में चला जाता है। जो कंपनीज के पास पे रह जाता है सेकंड टियर थर्ड टियर टैलेंट रह जाता है। And so a lot of these companies are stuck in this vicious cycle of training talent, spending time and resources on training talent, and then losing talent, right? And so जो पाकिस्तान का जो essentially जो एक आपका वो था ना कि arbitrage पे आप पैसे कमाते हैं for a lot of IT services company, right? वो आर्बिट्राज एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी का रिसोर्स आपको जितने पैसे में मिल रहा है उतने में आप ऑफशोर में बेच नहीं सकते उसको। सो आप कहते हैं यार डिवैल्यूएशन हो रही है, मेरा तो इंडिया से ज़्यादा कंपेरेटिव होना चाहिए। मेरे पास अगर एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट ज़्यादा है तो मैं तो एवरी सिंगल डे आई शुड बिकम मोर एंड मोर कंपेरेटिव। बट समहाउ दैट कंपेरेटिवनेस इज नॉट देयर एंड व्हेन यू रियली लुक एट द पिक्चर यू रियलाइज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। बहुत सीवियरली कंस्ट्रेंट। सो वहाँ पर जैसे ही कुछ भी मसला होगा वो सप्लाई इन्फ्लेट करेगी, और जब वो इन्फ्लेट करेगी तो वो प्राइस हमेशा नॉर्मल रहेगी, राइट? मेरा नॉर्मली हमेशा जब भी लोग आते हैं कि कहते हैं कि यार मैं बिजनेस लेकर आ रहा हूँ, मैं इकोनॉमी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है सर बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम ये है कि यू हैव अ ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम दैट इज प्रोड्यूसिंग हॉरिबल अनएम्प्लॉयबल टैलेंट। यस, पाकिस्तान में टोटल साल का जो है ना, मैं आपको एक बेसिक सा नंबर देता हूँ, 40 लाख बच्चा 18 साल का होता है, 2.5 लाख सीट्स एग्जिस्ट करती हैं टोटल हायर एड की, जो कि 2 साल के बैचलर्स डिप्लोमा इंक्लूडेड ऑफ फार ऑफ क्रैपी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड, टोटल 2.5 लाख सीट्स हैं। तो 37 लाख 50,000 बच्चा तो वैसे ही कहीं सर मारे जाकर, 2.5 लाख में से 25,000 बच्चा जो है वो IT एंड IT रिलेटेड सर्विसेज में जा रहा है। IT रिलेटेड सर्विसेज का 25,000 बच्चा जो है उसमें पाशा कहता है 20% इज एम्प्लॉयबल। सो 5,000 बच्चा आपका सालाना इतना आता है कि वो बमुश्किल एक जॉब ले सकता है। बाकी जो 20,000 है वो तो वैसे ही बस IT में घुस गया 4 साल गुजारने के बाद। अच्छा, उसको क्योंकि सिखाया सही नहीं गया तो आखिर में कहते हैं मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैंने IT करना नहीं है, हालांकि वो
एक्चुअल में सिखाने का मसला था, उसको सिखाया बहुत बुरे तरीके से था। अब इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अभी कल मैंने देखा उमर सैफ साहब ने बोला कि जी मैं आईटी, हालांकि वो केयर टेकर मिनिस्टर हैं, उनका काम नहीं है, 80 दिन के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं आईटी को 10 अरब पे लेकर जाऊंगा, फिर मैं 20 अरब पे लेकर जाऊंगा। मेरा पहला सवाल ये है, 10 अरब के लिए आपको 3,50,000 इंजीनियर्स चाहिए, जिसको आप $3,000 पर मंथ के हिसाब से बेच सकते हैं ऑफशोर के काम पे, ठीक है। एक बेसिक से मैंने नंबर निकाल के आपको दिया। 3.5 लाख इंजीनियर कहाँ से आएगा? कौन ट्रेन करेगा? कौन उनको, वो ये जो है ना कि यार 3 महीने का मैं बूट कैम्प कराता हूँ, पाइथन सिखा देता हूँ, वो इंजीनियर नहीं है, वो एक मैकेनिक है जो कि आज एक टूल के ऊपर काम क्विकली करके आपको निकाल देगा। वो 3,000 का इंजीनियर नहीं है। 3,000 का इंजीनियर कम अज़ कम मेरे हिसाब से 2 साल की एजुकेशन लेके बैठा हुआ है, जिसको प्रोफेशनल एथिक्स हैं, जिसको टीम के साथ काम करना आता है, जिसको विजन का कॉन्सेप्ट होता है कि यार आज मैं $500 ले रहा हूँ फॉर अ वेरी वेरी बिगर विजन, जिसमें मैं इवेंचुअली स्केल करूँगा। आज जो आपके ये क्वैकरी है, और वो बुरे लोग नहीं है, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, बट वो उनका मसला ये, वो 5,000 रुपये उनको कोई और देता है, वो सारा काम छोड़ते हैं, अगली जगह पे निकल जाते हैं। सो इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर how do you see the supply side? Because the industry has to figure out the supply side. The academia is not really doing that. Yes, and I totally agree with you on that. इसको आप 2 चीज़ों में तोड़ दें. This is not going to be solved by just AI and robotics, ठीक है? तो अब इसका जो social corporate responsibility का vision है, I didn't tell you one thing that I was about to tell you, but then we switched topics. वो मुझसे एक दफ़ा एक बंदे ने कहा था, and this is going to explain a lot about what this company is, particularly when it comes to the Pakistan aspect. मुझसे एक बंदे ने कहा था कि why are you doing this? I said I'm not doing it for the money. He said if you're not doing it for the money, what the hell are you doing this for? And I said maybe I shouldn't do this. Then he said no, that's not what I meant. What do you really want to do? तो मैंने उसको कहा कि मैंने अपनी अम्मी से एक दफ़ा कहा था कि अगर मुझे खुदा 1,000 हाथ और दे दे और 1,000 टांगे और दे दे तो मैं 1,000 और लोगों की मदद कर सकता हूँ। उसने मुझे कहा, and then he turned around and I was running this as a part-time company at that time. मेरा कोई ambition नहीं था, मुझे कंपनी में ना वो तो मेरी अपब्रिंगिंग थी। So he turned around and he said the one thing that changed my life. He said, do you know that the biggest charitable foundations in the world are tech companies? And that's when I realized that social corporate responsibility, 1% of our revenue for a very high growth, high potential company where we aspire to get to 5 billion in revenue in the next 10 years to 15 years, we can then start bringing in $50 million on an annual basis to Pakistan. Already हमने अपनी चैनल और ज़कात और सदका हमने डोनेट करना शुरू कर दिया है। अच्छी खासी रकम ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। And there are corporates around the world that are sitting with SCR money but do not have the right frameworks to deploy it to countries like Pakistan. So they end up giving it to some baseball team in the US or here or there because they need to have the compliance and governance and all those checks. मेरा इरादा है through SCR of Abyss and SCR of companies to bring an annual amount from 100 to 500 million on an annual basis to Pakistan. Dollars, not rupees, dollars. पाकिस्तानी सुनेंगे क्या बड़ी मार है इधर उधर की. Well, let's talk in 15 years again, right? Let's talk in 15 years again. We're already doing it at a small scale. Now, my goal is to become a top investor in Pakistan. To invest in microfinance. My goal is to invest not to seek returns, but to govern. Governance through microeconomies will help improve it. चाहे वो फौज का इदारा हो उसमें इन्वेस्ट करें, चाहे वो लोगों का इदारा हो, but the ability to help run the company properly. That is very important. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. इसमें दूसरी मेरी इन्वेस्टमेंट इस सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड्स टू गो टू एजुकेशन. हमारी एजुकेशन जो है, लोग समझते हैं एजुकेशन इज़ अबाउट मैथ एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. इट्स नॉट. इट्स अबाउट इखलाकियात, इट्स अबाउट बेसिक्स, इट्स अबाउट कल्चर. ठीक है. एंड वी शुड बी अशेम्ड ऑफ द फैक्ट दैट वी डू नॉट कंसिडर आवर हेरिटेज एंड आवर दीन, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पढ़ाते नहीं हैं. उसके ऊपर हम बात नहीं करते. अल्लामा इकबाल कौन पढ़ता है अब बच्चा? कौन ये विजन समझता है? वी नीड टू ब्रिंग अ विजन बैक, अ विजन दैट विल यूनाइट एवरीबडी इन द कंट्री, a vision that will give them hope, power, purpose. This needs to come through education. I have no problem. मुझे अभी भी मैं खुद पाकिस्तानी हमें मिले हैं, मैं खुद भी पाकिस्तान से पढ़ा हूँ. मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबको आ जाती है.
It's about integrity. It's about honesty. It's about the value of doing good work. It's about the pleasure of and the gratification you get from quality. It's about perfection. It's about transparency. It's about collaboration. It's about critical thinking. We lack critical thinking, and it's about confidence and self-esteem and all these things that make a person who they are. We as a nation lack this. I would like to invest in schools. I would like to build schools. I'm not going to run schools. I'm not going to design new schools. And I'm not going to run the companies either and tell them how to do it. I will bring experts. I will invite experts from overseas back to Pakistan. There will be that initial period where we will have trouble trying to get things off the ground. But if it was easy, anybody would do it. My most important thing is I don't own the outcome. I want to set a system in place that can keep running. And I don't want to bring politics into this. I just want the poor people to have a chance. और हमारे मुल्क में गरीब लोग, एक चीज़ मुझे पता है जो मुल्क में मुझे दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी. एक रोड बना दे नवाज शरीफ, ठीक है, तो वो गांव, वो कुछ भी कर लेगा, वो गांव उसके पीछे होगा. I've seen the effect of that. हमने इस तरह काम भी किया है, and it's a way to help people. हम जब लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लोग हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे. गंदे लोग होंगे, गवर्नेंस के लिए हमें लोकल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान बदल रहा है. What gives me hope is, एक तो अगर हमारी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ये, और अल्लाह का काम होगा, ये हमारा काम नहीं है, तो ये कर देगा. दूसरा ये लोगों में शऊर भी बढ़ रहा है. जो अभी हालात आपको पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर थ्रू द ग्लोबलाइजेशन आ रही हैं. ओल्ड वेज आर चेंजिंग. पीपल हु रन दी ओल्ड वेज नो देयर चेंजिंग. हम कुछ भी ना करें, शऊर आ रहा है लोगों में, ठीक है. दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ व्हाट दे नीड टू हैव एंड व्हाट दे कैन डू देन दे यूज्ड टू बी मैनी ईयर्स अगो, ठीक है. तो in my opinion, I think Abyss can make a big difference in Pakistan. It can help through these two ways: governance and education, financial governance and education. And I think there's one more thing I would like to mention. I don't think Pakistan में बहुत सारे लोगों को ये पता है, but they should know it. हमारी जो oil and gas resources हैं, they are at the same level as, I'm not a geophysicist, but I work enough in the oil and gas industry to know at least this much, कि जिस समंदर से सामने से अबू धाबी निकाल रहा है, उसके साइड से सऊदीया निकाल रहा है, इस साइड से हमारे इंडिया निकाल रहा है, इस साइड से हमारे ईरान निकाल रहा है, और अब इंडिया और ईरान डायरेक्शनल ड्रिलिंग करके हमारे रिजर्व से निकाल रहे हैं. We have enough natural resources. So IT एक्सपोर्ट्स तो हैं ही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इनफ ऑफ देम. क्यों नहीं निकल पा रहा पाकिस्तान का ऑयल? सर वो पे पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं. I'm not going to get into that. लास्ट गवर्नमेंट ने कहा कि जी बड़ा तेल है, अब तो अपग्रेड होगी. आपका है तेल, आपकी कंफर्म्ड रिसोर्सेज. पाकिस्तान इज, डू यू नो दैट पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड? डिड यू नो कि हमें कहते हैं, हमारे जो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई तेल और गैस नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है. आई एम वेरी अपसेट कि वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं. वो जाके पढ़ें कि हमारी कितनी तेल और गैस की रिजर्व्स हैं. तो वो क्यों नहीं निकल पा रही? There are many reasons for that, and let me get to that in a second. लेकिन हमारी, आपको पता है, do you know that we have 3 more reserves equivalent to the size of sui gas untapped? Pakistan has so much natural resources कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इन resources का benefit निकाल सकते हैं. Pakistan has the capability to do this. जिसने पैसे खाने वो खाता रहे. इतनी resources हैं कि खाने वालों को भी मिलता रहेगा. लेकिन जो नहीं खा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको भी मिलेगा. किसी से किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनको भी मिलेगा. तो क्यों नहीं निकाल रहे? इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, कंपनीज नहीं सर. OGDCL is not a baby organization. OGDCL is a very professional organization. It is probably one of the only organizations apart from the army that operates with discipline. It is a commercial outfit that is purely profitable, and it actually produces enough
to bail Pakistan out on several occasions. ठीक है? But there are other reasons which I don't want to get into, which I don't have much knowledge of either. Forces that do not encourage the exploration of these resources. Do you think if those forces were to become partners in that? There's a recent shift in... I would love to make them partners. There is a certain... I think they should become partners. SIFC that's been popped up, and certain OGDCLs and a lot of these have been moved there, and suddenly a certain percentage of that is being sold to certain other forces, and suddenly now it begins to feel like... Sir, us taraf mujhe na dekele. I'm not here to pick any fights with anybody. No, I think it's not a fight. I think it's a collaboration. I think I'm a big proponent of the region working together. Everybody gets a pie and we get some as well. Sir, I'm going to wrap this up. But this was incredible. One of the favorites that I've done. The पिछली 100-150 में से personally, this was one of the most exciting. So, thank you for all that insight, and I'd love to see you again. My pleasure. And for all of you guys, if you liked and enjoyed it, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, engagement बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों की कन्वर्सेशन पहुँचेगी. अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे कमेंट सेक्शन है, मुझे आके बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट नासिर हैज टॉक्ड अबाउट, पर्टिकुलरली एकेडेमिया. 2-3 कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस थे. साइंस इज डेड, टेक्नोलॉजी इज राइजिंग, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट, बहस के बगैर जिंदगी का मजा क्या है? जिंदगी का मजा क्या? एब्सोल्युटली. सो वुड लव टू हियर योर थॉट्स on all of this. Let me know in the comment section below. But anyways, this was Muzamil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.